Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on our 586th milestone today. Thank you very much for joining with a short notice. Thank you very much. After a long time, we are going to listen Dr. Soumya. She is very young, energetic, and dynamic Ayurvedic expert. And both experts, Mallikarjun Rao and Bhupendra Mani Tripathi, will also guide on Chilli. This is National Chili Day of Mexico. So we are celebrating chili for our Ayurveda. Because this is counter-irritant, digestive, the source of vitamin C. So many beneficial property chili have. And we are just means that whoever is fond of chili, that is fond of chili without knowing medicinal effects also. So I would like to welcome Professor Vishnu Prasad Sharma sir. Welcome for your welcome blessings. Dhanyavad, Namaskar, good evening to everybody, respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on Chilli Medicinal Miracle. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome them. First, I want to welcome Dr. Bhupendra M. Tripathi, Director, Sorok Classes, ex-Associate Professor, Medical Officer, Samba. Namaskar and welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Soima E.A., Associate Professor, Department of Kaya Chikitsa, G.J. Patel Institute of Ayurvedic Studies, Anand. Welcome, Madam. Namaskar. Next, I want to welcome Dr. P. Mallikarjuna Rao, Professor, Department of Agatantra, SAS, Ayurved Medical College, Guntakal. Namaskar and welcome to this evening webinar. Once again, I welcome all the distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen, to this evening important webinar on Chilli Medicinal Miracle. Namaskar, over to Pavanji. Thank you very much, sir. I would like to request all co-hosts can admit. So as I am talking and continuously doing something, so kindly support me by admitting and muting the persons. Thank you very much, sir. Thank you very much. I would like to request Dr. Agnihotri, sir, for his initial words. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Our respect to Professor B.P. Sharma ji, Professor Dr. K.K. Shajoria ji, our good friend Professor Nishan Sharma ji, Mallikarjun Rao sahab, and of course our respected Jagdishwar Doma ji. As Professor Pawan Sharma ji told that today is the National Chili Day of Mexico country, of course, and we are here with all pleasure, irrespective of the taste and irritation of chili. We are celebrating it today with a whole zeal, as we have stepped in for 586th time to organize this webinar. In this way, we are chilled enough, we are cool enough, but we are continuing the same matter. We are going to listen a lot from our respected guest speakers over the chilies, value, classification, size, shape, merits, demerits, and of course, preparations, formulations, internal use, local application, and all possible things. A few craze is there, the plain green chili, which we usually use in salad or in vegetable preparation in a form of chutney also. And also we will be having some knowledge from them regarding the green, bigger size
chili and the red one, bigger size chili, both are used for the achar purpose, for to make the chili stuffed, say pickles. So we are all going to this is the one of the ingredient or one of the recipe of our diet or food stuff. Apart from that, it's the medicinal value in a form of said by Pawan Sharma ji as a miracles that we are definitely going to learn. Of course, one thing is in my mind that in Canada, I was informed that they are having the capsicum capsules in a form of capsule. I haven't taken out its active ingredient as an alkaloid, and which is said to be useful for the treatment of BPH, benign prostate hypertrophy, or the prostate enlargement cases. So this is the least knowledge with us, but we are going to learn a lot that apart from its use in spice. Of course, today we are not talking about the other chili taste things like the black pepper. That will not. Only the green chili or the chili used for the pickles. So we are going to learn a lot from our respected guest speakers, from Dr. Our BM Tripathi ji, our Madam Soumya ji, and our Mallikarjun Rao sahab. So with these initial words, we are crazy enough to learn a lot as far as its medicinal use is concerned, with the commemoration of the National Chili Days of Mexico. Thank you so much for Dr. Pawan Sharma ji. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I would like to request a person who has always said to patient, don't use chili. Dr. K.K. Sejoria, piles expert, Salya expert. So without chili, don't take chili. If any piles patient come to him, he generally refuses. You are mute, sir. You are mute. Hello, am I audible? Yes, clear. Audible? Yes. Actually, chili spicy food hai. Just as Agnoti is told, it is very beneficial in BPH, as well as anti-inflammatory also, appetizer also. And sometimes we use its smoke in the unconscious patients also. Lot of properties. But for a piles patient, ऐसा नहीं है. We said avoid spicy food, which may cause problem also. When patient says, I take chili, I got burning. Chili should be taken in a desired amount. If you will take an undesired amount, then it may cause problem. Otherwise, chili is not contained in piles. You should take a limit. With few these words, I will respect to Pawan Sharma ji to ask the speakers to details. Thank you very much, sir. Chili in Thank short you. amount is not harmful. We recommend you take green chili. Thank you. लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची खाओ. जी जी जी. मैं अब डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं मिर्ची के विषय में उनके विचार जानने के लिए. डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, वेलकम. Am I audible to you, Dr. Bhupendra? जी सर, बस 1 मिनट में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. 1 मिनट का समय दीजिए. जी सर. In the meantime, you can start ex tempo also. Pause is not good for the webinar. जब तक भूपेंद्र जी जुड़ रहे हैं, आईफोन से जुड़े हुए हैं. या स्वागत है आप सभी गुरुजनों को और आज के जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं और जो भी वैद्यक समाज हमारे साथ जुड़ा है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मैं 5-10 मिनट लेट हुआ, क्योंकि सर मैंने आज से एक कार्यक्रम शुरू किया यहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है कि हर हफ्ते गांव में एक आयुर्वेद चौपाल लगाऊंगा. तो मैं शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक वहीं पर था और
40-50 लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी और यहाँ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आया। मैं क्लिनिक पर हूँ इस समय। तो सर, लाल मिर्च के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में सर्च किया, तो जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं उसमें बहुत ज्यादा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। और ये जो प्लांट है, इसको हम मैक्सिकन कहें या ब्राजील से आना कहें, 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में ये बाहर से जो एम्पायर्स या जो भी यहाँ पर शासन करने वाले लोग रहे, जब वो वहां से लोग आए तो उनके साथ ये लाल मिर्च आई। हमारे शास्त्र में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है त्रिकटु के रूप में, वो सर काली मरीच का मिलता है। तो उसको ब्लैक पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको तो रेड चिली है ही। एक रेस्टोरेंट भी था हरिद्वार में, रेड चिली करके। तो जो इसका प्रयोग है वो मसालों के रूप में ही है। लेकिन सर, मैं बताना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि अभी भी साउथ इंडिया में जब भी प्रयोग होता है वहां लाल मिर्च का प्रयोग कम होता है और ब्लैक पेपर का प्रयोग ज्यादा होता है, या ये कहें वहां अवेलेबिलिटी ज्यादा है। हालांकि मिर्च तो सब जगह ही मिल जाती है, लेकिन वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। जो इसका शास्त्रोक्त संदर्भ मुझे मिला, वो एकमात्र संदर्भ सिद्ध भेषज मणिमाला में मिला। वहां पर इसका वर्णन हमें मिलता है। जब बात करते हैं इसके प्रयोग की, अगर आहार के अलावा अगर इसका प्रयोग देखें, वैसे तो जो इसकी स्पीसीज मिलती है, सोलेनेसी का मेंबर है ये। तो कैप्सिकमेनम है जो हम लाल मिर्च कहते हैं, इसका एक और वेराइटी या स्पीसीज है जो कैप्सिकम फ्रूटिसेंस करके है। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के हिसाब से है उस तरह से। तो काउंटर इरिटेंट के रूप में कई जगह इसका लोकल एप्लीकेशन, और मॉडर्न फार्मा वाले भी कुछ ऑइंटमेंट बनाते हैं जहां पर कैप्सिकम का यूज करते हैं। तो ये काउंटर इरिटेंट ऐसा है सर कि कहीं पे अगर इन्फ्लेम्ड एरिया है या कुछ बर्निंग सेंसेशन, या कई बार जैसे हर्पीस वगैरह में जिस तरह की स्थिति न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वहां पर इसका प्रयोग जब करते हैं तो जो पेन है वो काउंटर इरिटेंट होने के कारण ऐसा लगता है कि पेन जो है वो कम हो गया है। कई तरह की जॉइंट पेन की जो समस्याएं हैं वहां पर भी लोकल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग होता है। शास्त्र में जो इसको कहा गया है वो ये कहा गया है सर कि रोग कारक भी है, पित्त को निहायत रूप से बढ़ाने वाली है। मैं कुछ संदर्भ लेके आपसे बात करना चाहता हूँ। जब इसका वर्णन किया जाता है द्रव्यगुण की, चूंकि मैं द्रव्यगुण का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो लाला प्रसेक जनन, मतलब सलाइवा को से हैं, उस ग्रुप में इसका वर्णन किया गया, और इसका नाम है वहां पर लंका के नाम से आया है। कटुवीरा इसका एक नाम दिया गया शास्त्र में कि कटु रसों में प्रधान है, क्योंकि जब भी मिर्च की बात आती है तो इसकी बात करते हैं। और ब्राजील ही, जैसा मैंने कहा कि इसकी उत्पत्ति स्थान जो है वहां पर है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें सर वो कैप्सिकिन है, वही इसका मेन कार्यकारी घटक है। और अगर द्रव्यगुण के हिसाब से अगर इसको फाइटोकेमिस्ट्री या देखें इसके जो रस पंचक या गुण धर्म है, तो जो गुण है इसके सर वो लघु, रुच्च और तीक्ष्ण है, जो कि हम सभी जानते हैं। रस निहायत ही कटु है, पूरी तरह कटु है, विपाक भी कटु है, और वीर्य उष्ण। अब इस अनुसार अगर इसका दोषिक वो देखें तो कटु और उष्ण होने से कफवात सामक और पित्त को बढ़ाने वाली होगी। लेखन का कार्य करेगी। सर ने कहा बीपीएच में बड़ा इफेक्टिव है, तो इसका ये लेखन कर्म है। लेकिन सर ये अगर इंटरनल यूज इसका ज्यादा किया जाए तो रक्त का उत्क्लेश करने वाली या रक्त को दूषित करने वाली, विदाही द्रव्य जितने भी हैं वो पित्त और रक्त में विकृति ही उत्पन्न करते हैं। और जब न्यूरोलॉजिकल उस पर देखते हैं तो जैसा मैंने कहा काउंटर इरिटेंट है, तो कहते हैं कि ये बात सामक हो जाती है वहां पर, और हृदय को उत्तेजना देने वाली है, और कफ वातज विकारों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल यूज है या टॉपिकल एप्लीकेशन है इसका, तो कफज शिराशूल में, आमवात में, कटिशूल में, या जैसे कभी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर इसका एक्सटर्नल यूज, या गृध्रशी में है, वेद बताया उन्होंने कि वातज और कफ वातज है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांव में लोग इसका सर कुछ प्रयोग करते हैं कई बार कि अगर डार्क बाइट हो गई है वहां पर, तो दंश स्थान पर इसका लेप करते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि उससे वेदना जो है वो कम हो जाती है, और
पस फॉर्मेशन नहीं होता है। और कई तरह के स्किन डिजीज में सरसों तेल में इसको मिला के या पकाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से, और चूंकि कटु है तो अरुचि और अग्निमांद में इसका प्रयोग या अनाह की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अग्निमांद की स्थिति तो कर सकते हैं, लेकिन सर अगर पित्त की प्रधानता है तो निश्चित रूप से लंका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस पे कुछ रिसर्च किए गए हैं। मैं जो सिद्ध भेषज मणिमाला का श्लोक है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वहां पर उन्होंने कहा कि अरोच के रेतः कफवात हारिणी विपाचिनी शोणित पित्तकारिणी मेदो अच्छी निद्रा अनल मांद्य हारिणी विसूचिकाम कृंतति पित्तकारिणी। जब हम गांव में थे, छोटे थे, तो वहां ये था कि गर्मी के मौसम में अगर प्याज का सेवन किया जाए और लाल मिर्च का सेवन किया जाए तो विसूचिका नहीं होती है, ऐसा कहते थे लोग। और राजस्थान में सर लाल मिर्च का प्रयोग बहुत होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत होता है। तो ऐसा भी इसके साथ है कि जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लाल मिर्ची का सेवन करते हैं। कि जो बाहर का टेम्परेचर है क्लाइमेटिक और जो शरीर का है, तो दोनों की उष्णता जो होगी, वो जब शरीर की भी उष्णता बढ़ेगी तो व्यक्ति आसानी से सरवाइव कर जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि चुरू जो है राजस्थान में वो सबसे ज्यादा हॉट और कोल्ड में वही मैक्सिमम उसमें रहता है। तो कफ और वात का जैसे हमने शुरू में ही कहा, लेकिन रक्त और पित्त को ये तो टारगेट करते हुए, और जितनी भी व्याधियां विदाही अन्न के सेवन से होती हैं वहां पर हमें इसका प्रयोग न के बराबर करना चाहिए। जैसे सर ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एनोरेक्टल प्रॉब्लम होती है जहां पर, तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि अम्ल पित्त की स्थिति में भी नहीं करना चाहिए, रक्त पित्त की भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो कुछ रिसर्च इस पे किए गए हैं, लेकिन वो एनिमल्स पे, रैट पे और बाकी पर किए गए हैं। वो मार्फिन के साथ भी इसका है कि इसका इंट्राथीकल जो प्री ट्रीटमेंट है कैप्सिकिन का, वो रैट्स पे किया गया है। तो तमाम रिसर्च है सर, लेकिन इंटरनल यूज ट्रीटमेंट की दृष्टि से ऐसा कोई घटक द्रव्य, ऐसा कोई योग नहीं मिलता है। लेकिन लोकल एप्लीकेशन में ज्वाइंट पेन और इस तरह की जो समस्याएं, जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि काउंटर इरिटेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो इसके एक्शन देखे गए हैं कि अगर इसको 0.1 मिलीग्राम पर केजी आईवी के हिसाब से दिया गया जब रैट्स को, तो वहां पर बीपी भी एकदम से फॉल हुआ, उनका ब्रेडिकार्डिया की स्थिति मिली। तो तमाम तरह की इस तरह के रिसर्च हैं। और मिर्च तो सर फिर तो मिर्च है, कहावत में भी मिर्च की बात है, हर तरह से मिर्च की बात है समाज में, और गाने बने हुए हैं सर हिंदी सिनेमा में। और तो ये मिर्च के बारे में सर जितना मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, मैंने प्रयास किया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई भूपेन जी, बड़ा सुंदर और संक्षिप्त रूप में आपने विवेचन किया। वो आजकल तो दोनों ही तरह के हैं, ओफो मिर्ची और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये बड़े गाने पॉपुलर हुए, ये भी आपने सही याद दिलाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब डॉक्टर सौम्या ईए को, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर सौम्या आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म, moreover after 1 year. Welcome. Thank you, sir. Sir, my screen is visible, sir. Sir, am I audible, sir? जी हाँ, आप ऑडिबल हैं मैडम, बिल्कुल स्वागत है आपका। Thank you, sir. Respected dignitaries and dear participants, namaste to all of you. So, on this National Chilli Day, I welcome you all to my presentation. So, this presentation is actually an attempt, a humble attempt to incorporate the concept of Ayurvedic understanding of red chili based on the Katurasa Pradhanam, which is the Katurasa Pradhana Dravyam. So once again, welcome you all. So the origin of go for slide show. Oh, sir.
You can go for slideshow to Okay. maximize the size. Now it is in slide, not slideshow, sir. Okay, please continue. Okay. Please continue. So the origin of chili. एनिमेशन के आगे मैडम स्लाइड शो का आइकॉन है, उसको क्लिक करेंगी तो स्लाइड बड़ी हो जाएगी। ऊपर देखेंगे इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन स्लाइड शो, तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। Sir, now slide, it is on slideshow only, sir. ओके ओके। So, first of all, where is the origin of chili? Let us see. That is, we know that it is classified under the genus Capsicum, which is from Solanaceae family. And it has been believed as it has been originated in Central America and first cultivated in Mexico. That is why they are celebrating this Chili Day. And how it come to India as well as Asia is through, that is, Portuguese have brought this miracle chili to India as well as Asia through their trades. So we know that why chili is so hot, because it contains a substance, chemical constituent is there, that is capsaicin or capsaicin, that causes the spicy heat or pungency of the chili. Then 22 varieties of chilies are there, but now actually 5 domesticated species are only available. That is capsicum species, Anum, Fruticans, then capsicum Chinese, pubescens, and bacatum. These 5 only available, marketly available now, but actually previously 22 varieties are there. So the nutritional value, actually Your slides are not moving. Moving, sir. Okay, sir. Not moving. Origin of chili is being presented. Slides are not moving. 1 minute, sir. 1 second. Now visible, sir. Why chili is hot? Yes. Okay. Okay. So the substance that give chili pepper is capsaicin, which is make it more pungent. So already mentioned that 22 varieties of chilies are there, but now actually 5 varieties are only available in market. So next is regarding the nutritional value. Actually 88% water content is there and 9% carbohydrate, 2% protein and 0.4% fat only is there in chili. And actually it is a source of many vitamins, especially vitamin C and B6. This is the nutritional value of chili. And let us see the health benefits of chili and what is mentioned in our Ayurveda, because whatever chili, we know that it is Kadurasa Pradhana Dravyam. So many researches have been conducted on chili that it reduces inflammation. It is having an anti-inflammatory activity. That is by stimulating blood flow to the area. Anti-inflammatory activity is there for chili. So in Ayurveda classics, actually, Katurasa Pradhana Dravyam is having the property of Rana Avasadhanam as well as Shobhaharam. Anti-inflammatory is there, already mentioned in our text, but not about chili, but about the Katurasa Pradhana Dravyam. So we know that even chili also is a Katurasa Pradhana Dravyam. And cardiovascular also, because researches have been conducted. That is, it has capacity to reduce blood cholesterol, triglyceride, and platelet aggregation. So that we can understand as Chinatti Bandhan is mentioned for the Katurasa Guna of Katurasa. So that aggregation can be avoided by the intake of especially capsaicin. Chinatti Bandhan is the property mentioned in our classics for Katurasa. Then another research has done on anti-psoriatic. So because it reduces pain, inflammation, tenderness, and scaling associated with psoriasis. So in the Mole and some publications, they have mentioned that this having anti-psoriatic agent. So what we can understand from our classic is it has Kleda Upashoshanam.
and Kushtaharam. So in Kushtam as well as skin disease, we know that there is involvement of phlegm. So that Upashoshanam happened by Katurasa Dravyam. So chili is also having the action for that. Then next is anti-rhinitic. That is also research has been done. That is tackle nasal congestion by helping clear mucosa from nose. So in our text, it is mentioned that Srodamsi Vivranoti. Opening up of Srodas can be done by the Katurasa intake. Then various form of applications are there for chili. It acts as an analgesic in topical ointment as well as nasal sprays and dermal sprays to relieve pain is there. So what will happen is the P substance is deactivated by the consumption of capsaicin. That is why it acts as an analgesic. And it acts as a biochemical pesticide used as a marine anti-fouling agent. And even we understand it is a non-lethal self-defense spray used by many women also. So the research work published, many researches have been conducted. So one is effect of daily ingestion of chili on serum lipoprotein oxidation in adult men and women was there. And it was used as monotherapy for osteoarthritis because it is having analgesic activity. That also conducted, and effect of capsaicin on prostate cancer cell. Already sir told that prostate cancer cell active means oncogenic activity, has anti-cancerous activity also there for the capsaicin. Then for cluster headache, they have conducted research for repeated nasal application of capsaicin. That is also based on this analgesic activity. And topical capsaicin application in the treatment of pruritus also, many researches have been conducted on that. Then coming to Ayurveda, we know that red chili versus green chili, because what is the difference between both red chili and green chili? Based on our science, based on the gunam, we can understand it as mainly all Katurasa Pradhana Vayu Agni Mahabhuta predominant. And the rasam, we know that it is Katu rasam. Then after intake also we can understand it undergoing Katu vipakam as well as Pushna Virya. So that is hot and potency is there for the chili. But the difference between green chili and red chili is green chilies, we know that little bit snigdham also. But red chili is more ruksham as well as cause dryness. So what will happen to our doshas? We know that by the intake of red chili, it is more ruksham, it is dry, so it will cause more vata gopanam. So, and green chili is actually little bit snigdham, ishat snigdham we can tell. So pitta gopanam is more, even though both are vata pitta gopanam, but from clinic we can understand that as red chili is more vata gopanam and green chili is more pitta gopanam in the patient. Even vata pitta gopanam happening, but patients will complain that by taking red chili I'm having more dryness in the body. Like that, we can see in clinics also. So we know that the properties of Katurasam is Deepanam. It is Deepanam, kindles hunger, and Pajanam, promotes digestion, because whenever we take chili, include food, chili in food, then we can understand at least we will get good hunger as well as digestion will be improved. And Ruchyam also improves taste because it stimulates the taste buds. And Kabahara properties also for the chili as well as Katurasa Dravya. So now where the problem arises, let's see. Because chili is the one of the hype spice as well as taste in the present era. And we know that the properties are entirely opposite to ojas. Because Katurasam, Katu Vipagam, Ushna Viryam, so it is entirely opposite to the ojas, which is Madhuram, Snigdham, Sheetam also. So nowadays we are excessively consuming this chili. So we have to know that it leads to depletion of ojas gradually. And Dhadukshayam can happen because that also, it is entirely opposite the Dhadus also. And gradually Vata Pitta Vriddhi will. So in Dhadukshayam can happen as well as Vata Pitta Vriddhi. Excess consumption leads to Vata Pitta Vriddhi. And Manasika Bhava also, because Rajo Drushti, Katurasam is more happening to Rajo Dosha.
So Manasika Bhavam also, Rajo Dushti also occurs. So we can see in patients as well as kids, those who are taking more chili, they are more agitated, as well as anger will be there. And we know, actually, as per Ashtanga Sangraha, Katurasam is having Atyadhiga Vada Gopanam properties mentioned. So we, from this, all things we can understand it as Panchavada Gopanam can happen by excess consumption of this spice. That also we should know about chili. So excess consumption leads to, first, based on dosham, Atyadhiga Vata Kopanam can happen. As per Ashtanga Sangraha, Katurasa excess consumption leads to not Vata Kopanam. It is mentioned Atyadhiga Vata Kopanam. So gradually we know that if that much of Vata Kopanam happen, definitely all Pancha Vata Kopanam will occur. So that is Prana Udana, all Pancha Vata. So the involvement of Panchavada is happening in arshas. So usually we can see the patients who are consuming more chili will manifest arshas. So hemorrhoids, because Panchavada Kopanam is happening. Then next is Pitta Kobam. So Vadam and Pitta Kobam happen. When Pitta is more, then gradually Pitta Dushti occurs. Rakta Dushti also happen. Rakta Pittam, even bleeding disorders, as well as even hypertension can also occur. We all only know about salt intake leads to hypertension, but it is not like that, because increased intake of this Katurasa Pradhana Dravyam leads to Rakta Pittam, bleeding disorders, hypertension, etc. So we have to advocate the patients to avoid Katurasam also. Then Rajo Dushti, because Manasika factor also there. So Krodham as well as irritability, all those things will happen to the patients. So this is the dosha action, as well as dhatu, because Shukra Dhatu Kshayam, excess consumption of Katurasam leads to Bala, as well as Shukra Kshayam as per Ashtanga Hridaya. So it leads to Shukra Dhatu Kshayam. So we know that it will gradually cause infertility, azoospermia and all. So these all things we have to keep in mind about while understanding about chili. So let me conclude. That is, judicial use of chilies is advocated, and excess consumption leads to many health hazards. So we know that even nectar will become poisonous if not properly consumed. Once again, thank you. Thank you. But with a request, please do join every day whenever you have time and topic of your choice. Please do join. Excellent presentation. Excellent. No doubt you have combined excellent, including research, actions, pharmacodynamics, everything you have explained. Very nice. You have made the day. Now I would like to request Dr. Mallikarjun Rao, Dr. Mallikarjun ji. Welcome. Yes, sir. Thank you, sir. So right from Dravyagun, Kaya Chikitsa, Good evening. and Bhagavad Tantra. Welcome. Good evening, all. Good evening. Yes, sir. It gives me good, immense pleasure to, in this evening, to share my views about chilies. It looks to be silly, but I am talking on chili. So this is what I observed from the seniors. Juniors will get a message that for every case, for every patient, we common advise avoid chilies, avoid brinjal taking, avoid wherever you feel not you get allergic reactions. So without taking much history of food habits of the patient, we regularly advise not to take tamarind, not to take chilies, not to take brinjal. What I feel it's wrong, because if you see the qualities of chilies, and if we see the qualities of brinjal, it is hridyam. Out of all vegetables, it is considered of king of the vegetables. Brinjal is king of the vegetables, and it is good for heart, hridyam, and it have good qualities as it belongs to Solanaceae family, and it induces mild sleep, and it is having good steroid-like chemical compounds. So instead, we advise for everybody same: avoid brinjal, avoid chilies.
let us consider the case to case. Purusham Viksha Samiksha Karayet. We must take every individual as different from the another individual. Cannot be taken as taken as granted for everybody. So what I feel is today with this, I will come to the topic proper with a little introduction about. We have many drugs in our history. If we go through our epics like Ramayanam, where Vishalyagnakarani, Sandhanakarani, Savarnyakarani, such drugs are there. We can see even in Susrutam also, Soma drug is there. So such type of drugs go on endangered, and it is those drugs are disappeared. And in the place of few such disappeared drugs, like today's drug Chilli and few others have come into the materia medica, Indian materia medica, and these are maybe taken as extra pharmacopoeial drugs, which are not indigenous, but it is brought to India. Somebody else, Persians, Arab country people, Muslims brought, kings brought, whatever. Because it came here and it is plenty available. Even tomatoes is not an indigenous plant, like chili is not indigenous plant. It is brought from Brazil, of course. Let us how to incorporate into our materia medica must be our motto, because we have lost many drugs, many celestial drugs like Soma, such type of drugs. So what I want to convey is, whatever is available, we will consider the properties of the drug. In case if it is equivalent to any drug, let us make it as a substitute. This is substitution techniques, abhava pratinidravyas. So you may be not knowing about it. Is without our notion, without our knowledge, chilies have been overcome, and it is came in the place of maricha. That's why we are calling it as kala marich, red marich, red variety of maricha. Kala marich is maricham, Piper nigrum, but here it is kala marich, red variety of maricha. So it is in title itself, it is replaced maricha. And when we consider the rasaguna viravipakas of maricha also having same, of course it is rasaguna viravipakas of katu, katurasa, tikshna, vishna viryam, katuvipakam, grahi, dipanam pachanam, all same as it is as maricha and chili also having same properties. Why can't we make it substitute for maricha? Maricha is very costliest, usually is adulterated, very prone to get adulterated. Instead, we can substitute with this. Okay, let me tell about the properties of chilies, and then you decide whether it can be a substitute or not. Chilies is a unique and popular spices. It is majorly used in countries worldwide, and it is one of the best preservatives for making pickles. Capsaicin is a bioactive compound or marker compound from chilies, and it is the way of mode of action of capsaicin. If we observe, it binds the pain receptors and causes intense burning sensation. This is the only observed hypothesis here. Capsaicin is an antioxidant responsible for its red color, and it's a very well known as commercial crop. Usually farmers cultivate for commercial purpose, and there is a huge diversity in genetic pattern of various varieties of chilies, of course. But when we consider the pungentness out of all the varieties, the Guntur variety of chilies is to the core. It is very pungent to the core. When you compare with the pungency with other varieties also. So this variety is named as Bhaskar variety of chilies, and the yield also gives highest yield with this variety of chilies, Bhaskar variety. So very common, it is exported variety.
And it is well-known vegetable also. Capsicum is taken as vegetable, and various salads making, flavors making, pickles making, and various presentations. Its presentations we cannot expect, we cannot imagine the chilies, salted chilies, if there is no salted chilies with samosa, and stuffed chilies, chili bhajis, pickles. It is not imaginable. That's why we are celebrating today Chili's birthday, and fourth Thursday every February. It is titled as National Chili's Day. Let us convey birthday to the chilies. And chilies have medicinal uses also. Our Tripathi sir, BM Tripathi sir already mentioned. It is mentioned in Siddha Bheshja Manimala, and all the Amayaka Prayogas mentioned the text have been explained very nicely and compiled very nicely. And the properties also explained by the Saumya ma'am, the varieties and their presentations. And I will come in different way how the chilies can be used in medical purpose. Yes, it is Katu Lagu Tikshna, Lagu Ruksha Tikshna, Kapavataharam, Pitta Prokopakaram, it provokes Pittam. Okay. And it is when we see the chemical composition here, it is very unique of its nature, and we cannot see this type of blend or combination in other drugs, because if we have fixed oil in any drug, it won't possess any volatile content in it. But here, chilies have volatile content, volatile oil, as well fixed oil too. So this is a very rarest of its kind, and it have capsaicin antioxidant, very well-known marker compound. Apart from that, it's a very good source for vitamin A, D, A, C, and E, vitamin E. So here, vitamin E is known as anti-fertility vitamin. It increases the libido. So it is also rich source for minerals, trace elements like magnesium, titanium, lithium, barium, iron, phosphorus, beta carotene, calcium, protein and carbohydrates in trace quantities. For daily needs, this much enough, what I feel. When we supplement to the body, this will take care of, this will enough. And it is, as per P.V. Sharma ji says, this drug as Lanka, Katuvira, under the title called Lala Praseka Janana. It is a salivary gobe. It acts as salivary gobe. It's a stimulant. It stimulates the salivary glands, and it secretes, it squeezes the salivary glands so that the salivary glands will oozes out the saliva, whatever present in the lobes. So that is its action, stimulation action, where when a drug is mentioned as stimulation, we need not give any of backup data that because of this it is doing the function. So it is because it's a stimulant, that's all. We need not give any data, backup data, this is how it is doing. So, and the another thing is, it have the very particular action is sympathomimetic drug. This is sympathomimetic. It acts as adrenaline. How the adrenaline mentioned in the emergency management. Similarly, chilies also do same type of action, adrenaline mimic type of activity. For example, in recent one movie, Jai Bhim, the movie name, where a constable will be doing his duty, and during his duty, one fellow will die in a lockup under his while he is doing duty, and he will test whether fellow have been died or not. So death declaration was done by chilies. You might have seen this movie. What he do is chili powder is sprinkled in eyes of the fellow. If he responds, he is alive. If he won't respond, he is dead. So this is one silly Ameka Prayoga with chili, what I feel.
whenever the yesterday evening itself, sir asked me, we have to talk about chilies, medical uses for chilies. So I thought, Pawan Kumar sir, when he asked me, straight away I thought this must be mentioned in the discussion. So that is how this has come to discussion today. So death declaration can be easily done by chilies. So that is one Ameka Prayoga with chilies. Yes, it is used in dog bite, alarka visham, and it is used in indigestion. It is used in aruchi, medoharam. It is the best fat burner, I can tell you. It burns the fat material, one particle enough to burn 8 molecules of fat. And it is said, what I observed is all these Solanaceae family members are sedatives in nature. That's why its title is Solanaceae. Solanaceae is known for its sedative activity. But in text, it is said Nidra, it disturbs sleep, Nidra Nashakam. Might be if it is taken in higher doses, it is irritant in nature. So it irritates and causes excitability and disturb the sleep. But it is when it is taken in mild doses, it will be definitely a sedative. All Solanaceae family members are sedatives. That's all. We can easily remember their properties. And it's a cardiac stimulant. Just like adrenaline, as I said, it's a sympathomimetic drug. How the adrenaline will stimulate the cardiac muscles. Similarly, this will stimulate cardiac muscle, and it is kamottejaka. It a stimulant, will stimulate the sexual vigorousness and urge of the sex. So in very common, we comment whoever anybody looks pretty or good, how sexy she looks, how sexy he is. We common use this, and sometimes it is compared with it is very hot like chilies. It's very common word. So here it is, the intention is, it is kamotejakam. It helps in increasing the desires towards sex. And even if we try not taking chilies for 1 week, well, when we take very bland diet, we won't get any sex desires. You might have felt it. So this increases the desires towards sex. That's all. But it is not sukralam and all, like other kamotejaka drugs. Increases the quantity of shukra dhatu and causes desires towards sex. It is different. This is kamotejakam. That's all. And yes, it is, when it is taken in excess doses, it leads to gastric irritations, and chronic way, if it is taken, it causes gastric erosions and causes ulcers, followed by ulcers. But ati sarvatra varjayet, we know this. When it is taken in excess dose, it must be avoided. It must be taken in how much we can, that much we can take. And the another thing is what I want to tell you here about Katurasa, especially when my student asked about, when I am talking about the taste, how the perception of the taste, Katurasa have no particular taste buds on the respective taste buds on the tongue. Yes, we have only 4 varieties of taste buds on the tongue, human tongue, dorsum of the tongue. For Katurasa, there is no special taste buds to perceive Katurasa, pungent taste. But how we can perceive the Katurasa is, Katurasa will irritates the taste buds, whatever existing, the 4 varieties of taste buds responsible for the 4 respective tastes. Katurasa and Kashaya Rasa have no particular specific taste buds on the tongue. So Katurasa will irritate the taste buds existing and gets perceived. Similarly, Kashaya Rasa also will squeeze us out. Kashaya Rasa will squeeze us out. So because of this particular squeezing type of activity, we perceive Kashaya Rasa on the tongue.
So that is one, how the katu rasa is perceived. Another thing is here, the chilies, katu deepana pachana dravya. But because of this quality, katu deepana pachana dravyas are not used in treatment of acid peptic disorders especially, but tikta pachana dravyas can be used in case if there is any gastric disturbances, GI tract related diseases like hyper-acidity, such conditions. Instead, we use katu deepana pachana dravyas, where we need to select tikta deepana pachana dravyas. So this much only I want to share with about chilies. And I thank all the audience and Pawan Kumar Sharma sir for giving me this opportunity. Over to you, sir. Over to you, sir. Thank you, Mallikarjun ji. And not only the pungent Thank you, sir. test, pungent scale that Bhoot Jalokia is the greatest chili having higher pungency markers. So every chili, they have now hot chili, red chili, green pepper, red pepper, yellow pepper. So means we have everything now in our control that what chili has. And it may be possible at that time that Shalya Karni, Shalya Vikarni, etc. ये यहाँ से हमारी इंडिया से बाहर चली गई हो और फिर दोबारा आई हो हमारे यहाँ, ये भी ऐसा हो सकता है. बहुत अच्छा. मैं अब अग्निहोत्री जी से ओपन सेशन के लिए सादर आमंत्रित कर. थैंक यू. नमस्कार पवन शर्मा जी. मतलब ये विश्व का एक अपना अलग ही चमत्कार होता है कि आपका सब्जेक्ट चाहे चिली हो चाहे हो सत्तू, हमारे पास नए से नए विचार देने के लिए नास्ति आयुर्वेदस्य पारम की ऐसी विधा है कि चाहे डॉक्टर BM त्रिपाठी जी हो, चाहे हमारी सौम्या जी हो, और otherwise Dr. Mallikarjun. Everybody is so equipped with the informations that it is pleasure to share to our this intellectual platform. And dare takingly, Dr. Mallikarjun Rao, just Yes, like Xerox, moved to a little bit advanced and stages first, second, third, fourth. Dr. Tripathi told only for the filmy songs based on Chilli. Dr. Mallikarjun talked about that the Chilli may be, he projected the hidden effect or the psychological effect of Chilli in a form of saying if a person is cool or a person is cool down or hot, so Chilli, so alarming or appreciating or making a pleasure. The fact is this, as far as medicinal use is concerned, we do remember all those who are above 50 that we have got a very good preparation of J&J Dishon company, that is Chesol oil. Chesol is a very good, of course it's a counter irritant, but it was having a great action. This is one company who made this thing useful. Apart from that, as we all talked about, in vivo, the use of chili or chili's preparation in vivo in a form of daily consumption in salad or in spices or in any form, its use in vitro. One thing I am remembering, of course, it's maybe silly, but it is. And those who are having above 50 age, they can just peep into their childhood age when they were having the cycles, not of today's status, tube cycle with a tube and tire. So in tubes, when it was just like hair like puncture, which was not being traced by any of the cyclists, I mean cycle shopkeepers, they advised that the red chilies, dry red chilies seeds, if you just put in a tube and put a few drops of water, say 1, 2, 3, 5 drops hardly, and then make a pump, flat it, put the air inside, the force of air will
keep the seed flyingly to that pore where the air is coming out from the tube. So it gets adhered, and all puncture repairs were when failed. This was the best remedy in vitro, the use of red chili seed, and we are pleasureful that we have done so many times, because it was only 15 paisa costing for a one puncture repairing, and this was costing nil paisa, because every kitchen has got a red chili. Take out one chili having 20-30 seeds, put it inside the place where we put that rubber tube connected, फूक मारी, 2 बूंद पानी डाला, हवा भर दी, गायब. हेयर लाइन फ्रैक्चर जैसे होता था, ऐसे हेयर लाइन पंक्चर इज बीन ऑलवेज रिपेयर्ड विदाउट विट्रो. दिस इज द चिली सीड यूज्ड इन विट्रो. Person like my seniority and experience will not go in vain, because now it is a tubeless tire of cycle, car, and everywhere. But it is in history, and we did it without. So this is one use of chili seed in vitro. So now we are going to start our open session, and we do hope persons like C.P. Sharma sir and Professor Dr. Jagdish Doma ji sir will definitely second my सबसे ज्यादा मिर्ची खाते हैं सर. Andhra, and I will also like तेलंगाना के जगदीश्वर जी हमारे साथ. हमारे हैदराबाद वाले VLN शास्त्री जो आंध्रा से थे, ये लोग जब नारायण हॉस्पिटल आते थे गांव अपने घर से, MD के इतने मोटे आम के अचार और चिली, स्टफ्ड चिली का अचार, लाल मिर्च का बुला के खिलाते देते थे, और चाहे दिन भर इरिटेशन होता रहे और अर्ली मॉर्निंग तक भी हो जाता था. But that was the pleasure of that pickle. So I am just going today. I will start our this discussion right from our honorable, our respected Dr. Jagdish Doma ji, because we are lacking of his blessings for so many months. So Adani Dr. Doma ji, you are most welcome. Namaskar. Please do come and share your experiences, clinical or otherwise, with the chili. Red chili, celebrating our this National Chili Days of Mexico. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Namaskar. रोमा जी है. अग्निहोत्री जी. जी प्रणाम सर, प्रणाम. सबको मेरा विनम्र प्रणाम. अब तभी तक गला गड़बड़ है कुछ क्या? हाँ, इसीलिए अरे आप थोड़ा सा बता दिए, थोड़ा सा बस. जी शॉर्ट में ही बताने का कोशिश करता हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता. और इतना ही की आवाज बदली हुई, थोड़ा सा आप कष्ट मत डालिए, थोड़ा सा बता दिए. तेलंगाना में पुराने वैद्य जो भी दवा देते थे, वात विकार के खासकर उस समय पर वो लोग देते थे मिर्च का पाउडर और मिर्च और लहसुन का मिश्रण का पाउडर ही देते थे, वो भी घी से खाने के लिए. ऐसा नहीं है आराम से तेल डाल करके खाने के लिए नहीं बोलते थे, घी डाल करके खाने के लिए बोलते थे. और वो छोड़ करके और कुछ नहीं देते थे खाने में, ऐसा वो लोग प्रैक्टिस करते थे. ये तेलंगाना का जो बसवराजियम का प्रैक्टिशनर्स है. नंबर 2, अभी जैसा जैसा विश्लेषण के तौर पर बता रहे थे, मरीचा, इसके बारे में विजयवाड़ा के प्रोफेसर द्रव्य गुण का निष्ठेश्वर का नाम लेते ही आंध्रा कांपता था, इंटीग्रेटेड एपी कांपता था. बच्चों ने अगर निष्ठेश्वर आया वाइवा के लिए तो पेशाब करना पड़ता. उन्हें आते ही पहले पूछा था उसका गुण, निज गुण क्या होता है. निज गुण में बताने के बाद उन्होंने पूछता था विपाक स्थिति ही. अभी यहाँ पर प्रस्ताव करने लगे कि निज गुण में मरीचा का होता है, माने जो पेपर, ब्लैक पेपर जो बोलते हैं, तो उसका गुण होता है कटु, तीखा, ये सब आप लोगों को तो बोलने का जरूरत नहीं. विपाक स्थिति में वो मधुर रस पैदा करता है. कहीं आम्ल रस पैदा करता है करके है क्या? लेकिन इसके लिए
मिर्च के लिए तो आम्लता पैदा करता है। ये बहुत ही विश्लेषणात्मक चीज है। इसीलिए निष्ठेश्वर आते ही हर जो भी पूछता था उन्होंने पहले उसका निज गुण और उसके बाद विपाक स्थिति, ये था। और तीसरा चीज है जो इसका हिस्टोरिकल इमर्जेंस, बंगाल में इसे लंका कहते हैं। बाबा का प्रवचन में खुद है कि इसे लंका कहते हैं बंगाल में, वास्तव में ये श्रीलंका से आए, सो नॉट फ्रॉम मेक्सिको। इफ एनीबडी इज इन इमेजिनेशन, Anand Murthy ji is not a simple personality, is being accepted either by India, and whosoever accepts, whosoever and do not accept. But he gives a long procedure of evidences. Then only he refers in his pravachana. उन्होंने खुद बोलता था, लंका बोलता था, उनके प्रवचन में है ये लंका से आए सो, लेकिन ये नहीं मैं बता सकता। जी सर, आवाज रुक गई। सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सर आदरणीय डोमन जी, आपकी आवाज थोड़ा चेक करिए, आवाज आनी बंद हो गई। लाल मिर्च नहीं खा गया। आ गया जी 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 जी। कुछ कनेक्टिविटी। मैं देख पा रहा हूँ शायद कुछ कनेक्टिविटी। Am I audible? Am I audible? Yes, now continue. Please continue. Yeah. Where did my presentation was discontinued? Because one call was coming. I just. Yes. You were talking about that this red chili is came from Lanka to Bengal. So they say red chili as Lanka. लंका मने and this is your guru जी। हाँ, लंका करके इसे बोलते हैं कि इसका स्पीसीज जो है ना श्रीलंका से आया सो। और नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर से डरते हैं बिहार लोग ने, सत्तू के साथ वो लोग थोड़ा सा हरी मिर्च करके वो खाते रहते रहे। लिट्टू सत्तू ये बिहार के वो मुंगेर तरफ वालों ने। और ज्यादातर से साउथ इंडिया में जो तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु, कर्नाटका, I think Maharashtra also, these people only take much red chilies, whether it may be in sambar, whether it may be in preparations, daily preparations, they use less green chilies. Likely, chili. Arjuna, am I audible? Yes, continue please. Yes, Audible? please. Yes, please continue, please. Continue. तो अभी मल्लिकार्जुन जी बोल रहे थे कि इसका थोड़ा स्टिमुलेंट होता है। वास्तव में अगर कोई तेलंगाना में ये सुने जाता मैं मिर्च नहीं खा सकता, मिर्च खाएगा नहीं, अरे तुम मर्द कहाँ से हो? मिर्च खाते ही तो मर्द है। ये तेलंगाना परिभाषा में है। ये नहीं है कि मिर्च जो है ना वीर्य वृद्धि करता है, एकदम नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर काली मिर्च कभी अल्सर केसेस में वो डैमेज नहीं करता, लेकिन जो भी मिर्च, खासकर लाल मिर्च अगर खिलाए तो वो तो नष्ट करेगा ही। तो इस सिलसिला में हम इतना ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सो पॉइंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही पुराने स्मरणीय
सर का नाम ले दिया, निस्टेश्वर जी का। ये के निस्टेश्वर जी हैं? हाँ बोलिए। ये के निस्टेश्वर जी है ना? उनका मैं सरनेम तो नहीं जानता, अरे लेकिन ही वाज विजयवाड़ा कॉलेज जो है ना, नूरी राम शास्त्री कॉलेज में बहुत दिन तक था। ही वाज ए कमांडिंग and he has written a book Dravya Guna also. Sir, I am remembering that our professor R.H. Singh sir in way back in 1981 when we organized an national conference, contributions of this Ayurvedic system of medicine towards the primary health care. We were one of the joint organizing secretary. He invited Professor K. Nisteshwar sir. So I just, as far as you told the Nisteshwar, I just recapitulated, and we had the fortune enough to have a darshana of him in BHU way back in 1981 or 82. Sir, As Nisteshwar sir I from have it is invited him. from Vijayawada. I have been Yes. hello. I have invited him. I invited him during the opening ceremony of new building of Srinivasa Ayurvedic Center. That means definitely in 80s. G+2 Vixala. Yes, in state. In Because 2000. In 2000, okay. I was studying there in MD, so our professor R.S. Singh invited him, and he invited B.J. Thakkar sir, R.R. Divakar sir, so many persons. So I do remember him. Okay, sir. Thank you. You talked very importantly that a person is supposed a man should supposed to consume green chili at least, so that he will be considered as a man. Of course, if he is there in Telangana or Hyderabad. Next, one thing very important in our kadhi and say sambar, they used to say bake the red chili as a tadka, and then they put in kadhi full size, full without making a piece. So कड़ी कड़वी नहीं होती है, उतनी जहरीली नहीं हो जाती मिर्च से, लेकिन उसका फ्लेवर आ जाता है। तो रेड चिल्ली के तड़का बनते हैं। वो मिक्स करके बताना बहुत जरूरी है। उसमें डालते हैं और इसमें सांवर, ये जो अपना ढोकला आता है, ढोकला में हरी चिली संग लाते हैं, उबली हुई शायद, वो मिर्च कड़वी नहीं होती है। हरी चिली ढोकले में संग जैसे लगती है। जो कुछ चीजें हैं जो रेसिपीज में अपना स्थान रखे हुए हैं। हम आगे चलते हैं। मैं कुछ बोलूं सर? प्लीज आपका दिया हुई प्लेटफॉर्म सबके पास है, आपका तो वही है। मैं मिर्ची का बड़ा अनन्य भक्त हूँ। मेरा फिस्टुला का ऑपरेशन हो चुका है जी, वो भी मैंने खुद ड्राइव करा के गया था और ड्राइव करके आया, लेकिन मिर्ची नहीं छूट पाई। लाल हो, काली हो, पीली हो, हरी हो, मिर्ची हर रूप में पसंद है। आप यूं समझिए, एक बार खाने में 8 से 10 मिर्ची मुझे लगती है। नहीं तो सर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि मिर्ची का फिस्टुला से क्या मतलब? मिर्ची का मजा तो जवान पर है, वो आपको लेना है। अब फिस्टुला नहीं सर, जो रात को आप जवान पे मजा लेते हैं, वो सुबह आपको पश्चात भाग मजा। तो वही तो, वो आफ्टर इफेक्ट भी तो वही झेलेगा। जो गाय दुहेगा तो गाय की लात वही खाएगा। एक मैंने बड़े एंथू में सर, दुनिया की सबसे तेज मिर्ची खाने को मैंने भूत जलोकिया का अपने यहाँ पेड़ लगाया। अच्छा। भूत जलोकिया असम की मिर्ची है, जो पंजेंसी इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई है, हाईली इन्फ्लेमेबल। भूत जलोकिया, उसकी ऐसी बुरी गंध थी कि उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया। उसकी गंध जिसको अच्छी लगती होगी वो निश्चय ही महान है, और उसको मिर्ची बड़ी प्रिय आती होगी, इसमें कोई शक नहीं है सर। भूत जलोकिया वो फाउल स्मेल होती है, पुट्रीफाइड जैसी फाउल स्मेल। हाँ सर, हमें याद आएगा पुट्रीफाइड, क्योंकि एक लखीमपुर की मिर्च होती है हमारे यूपी में, गोला मिर्च कहलाते हैं, गोल होती है, बहुत पंजेंट होती है, लेकिन वो बदबू नहीं है। मिर्च, एक लवंग मिर्च होती है पटना में, हाँ, लौंग जैसी मिर्च होती है, थोड़ी सी खा लीजिए तो अंतरात्मा हिलने लगती है। बिल्कुल लौंग वाली वो। नहीं सर, और आगे बढ़ा सर, मैं मिर्ची का बड़ा प्रिय हूं ना, तो एक जोलो चिप्स आता है, जोलो चिप्स, वो कमबख्तों ने उसमें इतना लिख दिया है कि यदि आप सुसाइड करना चाहें तो इसको खाएं। अब वो बच्ची मेरे सामने ला दी एक पापड़ का टुकड़ा,
200 रुपए इनने बर्बाद किए मेरे, और वो फटाफट खा गया मैं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया कि वो वो तो जो आपने लोग वीडियो डाला था वो वाला, तो आपने देखा था, इसमें तो कुछ जी भी सर, नहीं है। वो मिर्ची की इंतहा है, तो मैं 70 नहीं समझ पा रहा, और कौन सी मिर्ची मुझको जलाएगी ये नहीं समझ पा रहा। प्लीज कंटिन्यू। जहां तक मिर्ची की रेसिपीज का सवाल है, all the manufacturers of our FSSAI group and all that, they are using their powdered form as a stimulant and irritant to release saliva more and more on the tongue. ये भी आयुर्वेद का, आयुर्वेद और योग जैसे आयुर्वेदा और योगा बन के आए ना सर, ये हमारी अच्छी वाली मिर्ची आजकल पिज्जा के साथ में चिली फ्लेक्स बन के आ गई। चिली फ्लेक्स पाउडर, बिल्कुल बीज बीज वाला। पाउडर नहीं सर, पाउडर नहीं, बीजे। बीजे जो यदि कोई फाइल्स का पेशेंट खा ले तो हाँ। सुबह निश्चित वो बीजे निकलते निकलते कितना कष्ट देंगे, वो भगवान मालिक है उनका। लेकिन रियली मल्लिकार्जुन जी कुछ बोल। जी हाँ, हाँ, अग्निहोत्री जी, उनका जी। इनिशियल था, सरनेम था के निष्ठेश्वर। मुझे याद आ गया, मैं एकदम 81 के निष्ठेश्वर सर, क्योंकि ऐसा ना जो लेटर्स वाला बनाते थे, फर्स्ट सर्कुलर, सेकंड सर्कुलर, थर्ड सर्कुलर, वो मेरे हाथों का ही लिखा होता था उस जमाने में, इसलिए मुझे याद है। मैंने के निष्ठेश्वर पहले लेटर पर फोल्ड करना, स्टेपल करना, एड्रेस लिखना एंड देन रजिस्टर में चढ़ाना, so that it dispels. So I am definitely remembering that issue. He was his full name was K Nishwar. Okay, thank you sir, thank you so kind of और एक बात है, और एक बात है अग्निहोत्री जी, अभी मिर्च दिखने के लिए बाजार में दिखता है, वो मैं पेशेंट्स को इतना ही बोलता हूँ कि वो तेलुगु में बोलते हैं तोटा मेरे पकायल तिनंड्रा बोलता हूँ, माने तोटा मेरे पकायल माने जिसको ज्यादा बगीचे में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं, लंबी लंबी रहते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ पेशेंट्स को मिर्च खाए तो बाल जो है ना एकदम हिलना चाहिए, वैसा मिर्च खाना कुछ नहीं होता है। लेकिन ये फालतू के जो लंबी लंबी दिखता है वो खाए तो ना तेज होता है ना कुछ, वो हानिकारक होता है, बिल्कुल हानिकारक, क्योंकि उसको जो है ना काफी केमिकल्स डालते हैं। ये जो छोटे छोटे होते हैं वो जो तोटा मेरे पकायल बोलते हैं तेलुगु में, उससे ज्यादा ये नहीं होता है और वो ज्यादा गांवों से आता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो फेक होती है। तेलंगाना के बारे में बता रहा हूँ जी। अच्छा, भरमा मिर्च तो मोटी वाली होती है ना, बड़ी वाली, चाहे लाल हो या हरी हो, जिसको इसका पिकल्स बनाते हैं जी। ठीक, पिकल्स बनाते वो अलग है। आपको मालूम, आपको न्यूज में सुने आया या नहीं कि रिसेंटली वरंगल में द हाईएस्ट कास्ट ऑफ इंडिया जो हुआ, उसका हुआ 10 kg 25,000 के ऊपर गया, और नियर अबाउट इट वाज अबाउट टू रीच 26 or 27,000 लाइक दैट। फॉर द फर्स्ट टाइम वरंगल मार्केट में उतना दाम हुआ फॉर 10 kg। वो दूसरा स्टेट से आके खरीदे हैं, ये न्यूज में भी आया था। और वो इतना अच्छा रहता है, भी हाई क्वालिटी का होता है। हम जब कभी भी जाते हैं बाजार में, मेरा बेटी तो बोल देती है एकदम ऐसा दो कि जो तेज होगा, जिसको जो है ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स नहीं डाले। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so kind for all your submission and additions of so many suggestions and experiences. Now I would like to invite our respected ex-joint director, sir, Dr. C.P. Sharma, sir. Meanwhile, I make a request and appeal. There's those who have got some informations and wants to share some of their experiences. Please raise the hand so that I would be calling them, inviting them after Dr. C.P. Sharma ji, so that the time will be saved and we will be having a lot of good informations. Moreover, our Sharma ji presenting something. Dr. C.P. Sharma sir, you are invited. Please, namaskar. हेलो सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सी पी शर्मा सर, नमस्कार। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, मिर्च के बारे में कुछ बताने की शुरुआत करिए।
ये अपने नव कुमार सर आप बताएंगे कुछ? जब तक शर्मा जी जुड़ रहे हैं सर, जी अब ये अपने यहाँ देखिए आप, जी स्कोविले स्केल कहते हैं इसको, पंजेंसी स्केल को, स्कोविलो हीट यूनिट्स। ये स्कोविले हीट यूनिट्स अपनी कैरोलिना रेपियर में 14 लाख से 22 लाख यूनिट है। अब उसको मैं तुलना करते करते नीचे चला हूं, अपनी इंडिया में कौन सी मिलती है, तो मतलब वो तो कहीं भी घोस्ट पीपर, हाँ, भूत जलोकिया, जिसको घोस्ट पीपर कहा सर, जी जी 55,000 यूनिट्स, इसको बोले हीट यूनिट्स, मतलब ये कितनी हीट जनरेट करती है। तो भूत जलोकिया विश्व में तीसरे नंबर पे है, और बेल पेपर 0 है, बिल्कुल नहीं है उसमें। जेलेपिनो बहुत नीचे से आती है, और टोबेस्को, मतलब आप देखिए ये मिर्ची के स्केल्स हैं, जो स्केल्स में उनकी क्वालिटी को हम लोग जांचते हैं। जी प्लीज। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। हम देख पा रहे हैं डॉक्टर हरीश शर्मा मल्लिकार्जुन राव जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम धन्यवाद जी प्रणाम। एंड जी डॉक्टर सर, पवन प्रणाम सर, शर्मा जी प्रणाम सर। नमस्कार। सभी बहुत आचार्य दिनों बाद आफ्टर अ ग्रेट लॉन्ग टाइम जी आई सर। एम एबल टू सी यू सर। आजकल सर राजनायकों के संग व्यस्त है, हाँ, हम लोग आयुर्वेद के छोटे छोटे आदमी कहाँ लगते हैं सर, मतलब हम सही लोग है। छोटी सी सिपाही अरे हैं सर, इस समय राजाओं के साथ व्यस्त हैं। सर लेकिन सर इनका कैप्सिकम कैप्सूल मुझे याद आ गया, हमने आते के संग इंट्रोडक्टरी में जरूर इन्फॉर्म शेयर कर दिया था, तो उस समय याद आ गई थी कि डॉक्टर हरीश शर्मा जी ने ये बात शेयर की थी एक दिन, कैप्सिकम कैप्सूल फॉर बीपीएच दैट आई मेंशन्ड इन अर्ली इनिशियल वर्ड्स। तो बिल्कुल सर, आप इस पे शेयर कर रहे हैं? बहुत सारा काम वेस्ट में हुआ है जी। इसको जो रेड पेपर जिसे हम कहते हैं, लाल मिर्च कहते हैं, उसको यहाँ केन पेपर के नाम से प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मैं देखता हूं अगर कुछ शेयरिंग हो जाए, जैसे ये प्रोडक्ट देखिए, केन पेपर के नाम से कैप्सूल्स आते हैं यहाँ कनाडा में। इसमें केन पेपर के नाम से मिलता है, और इस पे जो रिसेंट रिसर्च, 2 रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं। एक तो रिसर्च पेपर है ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर रिसर्च पेपर है, बहुत ही कमाल का। मैं देखता हूं अगर वो शेयर कर सकूं आपके साथ। और दूसरा, केन पेपर का जो रोल है वो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छा पाया गया है। ये आर्टिकल पबमेड पे अवेलेबल है। ये दोनों आर्टिकल मैं ढूंढ के अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये देखिए, ये आर्टिकल, ये तो ओबेसिटी के ऊपर है। ये केन पेपर का, कैप्सिकम का इन्होंने यूजेस बता रखा है, और ये रिसर्च आर्टिकल है जो कि एनआई नेशनल लाइब्रेरी की वेबसाइट पे है। डाइटरी कैप्सिसिन एंड इट्स एंटी ओबेसिटी पोटेंसी। तो आयुर्वेद के एंगल से आम पाचक तो है ही है, ये कफनाशक है ही है, लेकिन रिसर्च से भी साबित हुआ है कि ये ओबेसिटी और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह सब कंडीशंस में काफी इफेक्टिव पाया गया है। और एक आर्टिकल और मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे आ जाएंगे आर्टिकल्स। इसमें एक आर्टिकल है जो बड़ा यूजफुल है, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए काफी अच्छा होगा ये आर्टिकल। ये देखिए, नेचुरल पेपर्स नेचुरल इंग्रेडिएंट कैप्साइसिन इंड्यूसेस ऑटोफेजी ब्लॉकेज इन प्रोस्टेट कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो यूज है वेस्ट में, इसके लोग कैप्सूल भी इस्तेमाल करते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल भी आते हैं, और बल्कि इसके कॉम्बिनेशन कई तरह के आते हैं। लहसुन के साथ कैप्सूल का, लहसुन के साथ मिर्च का कैप्सूल भी अवेलेबल है।
अब वो हर व्यक्ति का अपना अपना एंगल होता है, उसको कैसे यूज करना है। तो वेस्ट में कैसे केन पेपर को यूज करते हैं, आज इसके लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। एक चीज आपसे आप आए पूर्वज जुड़ी है। कितने नहीं सर, अपने पूर्वज कितने स्मार्ट थे। कैप्सूल उस समय चलते नहीं थे, आदमी को कैसे खिलाएं। गुजरात में ये सबसे बढ़िया रेडीमेड चटनी है। आप मिर्ची और लहसुन को मिला लो, उसमें जी। चाहे घी डाल दो, चाहे सरसों का तेल डाल दो, जो जी। वक्त में मौजूद हो, जी। तो वो हर एक के घर में रहती थी। तो ये जी। कैप्सूल माने मिलीग्राम के डोज में से भी ज्यादा जाती थी। एक बार चटनी खा ले आदमी तो 2-4 ग्राम लहसुन तो चला जाएगा उसके पेट में। जी। जी। आज हम वो एक्सट्रैक्ट पे आ गए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, प्रोफेसर पवन शर्मा जी, हरीश जी अगर जुड़े हुए हैं तो आप उनसे वो बात शेयर करना चाहेंगे? हालांकि आपने तो पहले ही कह दिया राजनयिक संबंधी ज्यादा हो गए। हरीश जी अपने जुड़े रहिए। आपको प्रोफेसर सुनील जोशी जी याद कर रहे थे कल जी सर। परसों में। अच्छा। तो वही क्योंकि आप जानते हैं और जुड़ भी चुके हैं आप पीछे। हमारे यहाँ अभी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यहीं पर हरिद्वार गुरुकुल में एनाटॉमी पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब वर्कशॉप है जिसपे कि ऑनलाइन डायरेक्ट डेमो डिसेक्शन का दिखाएंगे। तो जी। उनका मंतव्य यह है कि एक सेशन को हमारी IRES को देना चाहते हैं और हमारे प्रोफेसर पवन शर्मा जी उसकी अध्यक्षता करें और ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड टाइप पे बने। तो उसमें हमें आपसे एनाटोमिस्ट जो आपके फॉरेन के हो, जिनके आपके ताल्लुकात हो, उनको प्लीज आप पवन शर्मा जी को शेयर कर दीजिए, तो उस दिन ये बन जाएगा। उसमें 3 स्टेप है। अगर आपके यहाँ का टाइम सूट करता है, हमारी कॉन्फ्रेंस तो 10 से 4 के बीच में ही चल रही है ना। ये बात है 3 तारीख को उन्होंने समय दिया है, 3 मार्च का, तो हमें दे दीजिए। अथवा उनको जो टाइम सूट करता है उसके लिए आप रिकॉर्डेड उनका वीडियो डाल दीजिए जिनको हम शेयर कर सकें पहले से। और अगर डायरेक्ट जुड़ते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। तो हमें आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, इसमें आप थोड़ा सा होमवर्क करके बता दीजिए पवन शर्मा जी को, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी अपने लोगों के कंधे पे आ गई है। आप विदेश में बैठे हैं, कनाडा आप बैठे हैं, तो किस दिन काम आएंगे। मैं आज ही किसी से बात करता हूँ। आज प्लीज, बात करके क्योंकि वहां पर हमें फॉरेनर चाहिए। देखिए एनाटोमिस्ट बहुत है, हम ई शर्मा जी को भी हमने नाम रख दिया है कि वो आ जाएं और अपने स्टीना एंडरसन हो जाएं। मतलब वो तो इसलिए आए थे फॉरेनर्स, लेकिन जो एनाटोमिस्ट है मतलब एनाटॉमी के हैं, तो वो क्योंकि हमारे उत्तराखंड के 1000 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सारे मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स और सारे 18 BMS कॉलेज के स्टूडेंट। तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स मैंने कैपेसिटी होगी उस दिन, स्ट्रेंथ होगी। और सारे तीनों चारों पांचों 18 कॉलेजेस के फैकल्टीज एनाटॉमी डिपार्टमेंट के और आप सब लोग। तो चूंकि पवन जी इस समय टूर पर हैं अहमदाबाद, मुंबई, हमने उनको जिम्मेदारी दे दी थी, आपसे संपर्क हो नहीं पा रहा था। इधर जोशी जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको जिम्मेदारी दे दी है, तो अब ये सब आप लोग संभालिए। नहीं तो चूंकि उन्होंने आपको याद भी किया है, तो आज मौका लगा आप आ गए हैं, तो इसको करवाइए। मतलब पॉजिटिवली करवाइए तो मजा आएगा, नहीं तो हम उनसे कह मैं देंगे देखता हमारी हूँ सर, मैं हाँ। देखता हूँ अगर अपॉइंटमेंट किसी से मिल जाती है तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो फिर मैं आपको ना एक टेक्नोलॉजी का वेबसाइट जरूर शेयर करूंगा, जिसमें जो वेस्ट में एनाटॉमी पढ़ाते हैं आजकल, जैसे CT स्कैन हम करते हैं, वो लाइव मतलब डेड बॉडी को रखते हैं, तो सारा कुछ उसमें से दिखाई देता है। देखिए वो आप वो तो नहीं, जिस बंदे को दिखाना है उनका हमें वीडियो चाहिए। फिर ऐसे वीडियो तो विकिपीडिया में और गूगल में मतलब करने वाली मैं बात ही देखता नहीं हूँ है। जिस मैं देखता रिस्पेक्टेड हूँ पर्सन को जो प्रोफाइल के साथ में जुड़े हैं, मतलब जो खुद एनाटॉमी इस समय अपने कॉलेज में कहीं कर रहे हैं, तो वो जी, थोड़ा वो ज्यादा वाइटल मैं जाएगा देखता ना। हूँ अगर कोई रिसर्चर मिल जाता है तो आपसे कनेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आज बहुत शुक्रिया। आज आज मल्लिकार्जुन से जी का कोशिश करते हैं। हाथ रेज दें। उन्होंने बताया था कि निष्ठेश्वर जी को नाम बता रहे थे, उसके बाद उन्होंने हेड डाउन नहीं किया। प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी, अगर आपने कुछ जोड़ना है तो ठीक, नहीं तो हेड डाउन का वो बटन दबा दीजिए। डॉक्टर हरीश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एडवांस में। मल्लिकार्जुन जी कुछ बोल रहे हैं। यस सर, आइए आइए Yes, sir. राव साहब, स्वागत है। Yes, sir. I'm talking about as we are talking about Yeah, please. Nishteshwar, sir. अच्छा Dr. अच्छा, K. Nishteshwar from Vijayawada. Yeah. He is. I am fortunate enough. I am student of Dr. Nishteshwar, sir. Yes, I was also accepting you. And another thing is when
when when I am searching about information for mirchi, what we know is chili powder looks red, but interestingly, we can make chili powder in green chili How? powder. How it is? How that's what sir. How it is means it is dried in fridge. Okay. और bleach तो नहीं करते कहीं? Yes, sir. It is dried in the freeze, cool freeze. And when I told to my wife, it is chili powder, see in green color. But And it she doesn't. told It it is doesn't not new for lose the quality. इसकी merits तो नहीं No, कम हो sir. जाती? अच्छा. No, nothing, sir. No, nothing. So we also And, used to keep all the garam masala and all the masala packets in Yes, the sir. fridge. That's as Just it is, sir. As it is red chili powder. Oh. We can use it. But it turns the color. Yes, it preserves color. That's all. Okay. It's fine. It's Like fine. how we have green marich, red marich. We used to keep the chutney, prepared chutney, etc. in the fridge simply because to protect it and to consume for a longer period. Yes, sir. It is dried freezers. Dried freezers. It is dried in freezers, compressed freezers, so that it will dry away. Okay. We can make it. No, that's entirely different thing. Dried freeze method is something different. I just recapitulate one incident way back, say in 90s, I think 98. I was there in Anantpur Sahib, where the 300 years of Khalsa Panth was celebrating throughout 1 year. There I got a person, he was a retired professor of chemistry from Punjab University, Mr. Professor Darlan. He brought some of the so many Ayurvedic preparations with him, and he was having a very good stall. And when we were all returning on completion of that program of 3 days, just to reduce the weight, he shared so many things amongst us all. And one of the thing was freeze-dried method, amla. So that amla, it was just completely spongy. You put in the mouth, it melts like anything. So he told me that it is a process to prevent or protect such type of these things in a natural form. So amla is been stored in a freeze-dried method. That was given. The knowledge was given by Dr. Professor Rallan sir. So I Sir, do hope that you are talking on the same manner. Yes, sir, same topic. So same topic, sir. So red chili, green chili, red chili remains intact in a form of the spongy this freeze-dried method. I think the moisture part, the water content is almost removed. I think. Yes, in green chili, as it is, moisture content is removed and it will become stiff, and it will be very brittle enough. You can easily make powder. And how it is dried in sunlight, it turns in red. So it becomes a spongy and completely crispy. Yes, sir. It becomes stiff and brittle. So we can make easily powder. I got an occasion to enjoy and to taste this thing. Of course, with the amla preparation. Thank you so much for pouring this good knowledge to our youngsters. Those who have not experienced, they might be having a great contribution from your side as far as the informations are concerned. Now, I would like to invite very respected Dr. C.P. Sharma sir, our ex-joint director of Madhya Pradesh. Swagat hai sir, namaskar. And if it takes time, I would like to invite Dr. Navakumar Hajarika ji from Assam, Guwahati. He might be having a different type of information from Assam state because no state is spared as far as the chili and chili use are concerned, and we doctors are supposed to have the better use as medicine apart from the recipes and the means edibles or chutney or pickles, etc., etc. What information is with you regarding its medicinal use? Yes, please. Namaskar. Yes, sir. Namaskar, sir. Namaskar, Agnati sir, then Pawan Sharma sir, and all of the resource person. Today is very nice topic regarding chili. But without Assam and Northeast, that chili will not be explained more because in every type of chili are available in Assam.
and even also Northeast. So I can share that the Bhut Jolokia, already Pawan sir has told about this Bhut Jolokia. ये इतना बढ़िया जलकिया है, ये वर्ल्ड में ये असम में जलकिया बोलते हैं, जैसे लंका बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, हमारे यहाँ पे जलकिया बोलते हैं। तो भूत जलकिया जो होते हैं ना, ये इंटरनेशनल मार्केट शुरू हो गया। हमारा एक क्वीन भूत जलकिया क्वीन बन करके ये करीब ज्यादा भूत जलकिया सिखा करके ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड 2-3 बार हुआ। ब्रिटेन में एक्सपो ये एग्जीबिशन हुआ था, उसमें ये प्रिकेल वगैरह बना करके भेजा था। और अभी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में रेड चिली के ऊपर ढेर सारा रिसर्च भी चल रहा है। तो उसमें देखा गया कि इसमें ज्यादातर जो हाइपरटेंशन केस, इसमें भी भूत जलकिया का रोल है। लिपिड कम कर देते हैं, लिपिड का जो बढ़ा हुआ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, इसका भी कम कर देते हैं। जैसे हार्ट डिजीज में भी भूत जलकिया का कोई इसका पब्लिकेशन हुआ है, कोई रिसर्च पेपर का? ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप कि रेड चिली यूज करने से जी, ये पब्लिकेशन भी हुआ है, ढेर सारा पब्लिकेशन आया बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं सर। असम में अभी भी रिसर्च चल रहा है रिगार्डिंग दिस जलकिया चिली। अलग अलग चिली का वेराइटी लेकर के बायोटेक्नोलॉजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अभी तक शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, बड़ा वाला प्रोजेक्ट है इन लोगों का। और दूसरा बात है, जो हार्ट डिजीज में भी ये भूत जलकिया का बहुत रोल है सर। हार्ट डिजीज जिन लोगों ने खाते है। और एक छोटा सा चिली होते है, बहुत छोटा है, इसका लोकल नाम अलग है, लेकिन मेरा पूरा बोटेनिकल नाम याद नहीं है। ये वाला हमारे यहाँ पे इतना चलते है, इसको आप मछली के साथ फ्राई करके लेते हैं और एंजाइम जैसा सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, ये लूज मोशन शुरू होते हैं। और जिन लोगों का मान लीजिए ज्यादा पच नहीं जाता है खाना, इन लोगों का खाना पचना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मांस मछली खाने वाला लोग, ये लोग ज्यादा लेते हैं। और जो ग्रीन चिली के बारे में बता दिया, ग्रीन चिली सबसे हमने यहाँ पे हमारा जो सलाद होते हैं उसमें या तो चटनी बना करके पुदीना के साथ और लहसुन अदरक डाल और सलाइवेशन बढ़ जाते हैं और खाना पच जाते हैं। इसके लिए बीच बीच में इस्तेमाल होता है। कुछ लेकिन चिली है, जिन चिली खाने से आपको गैस बन जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सिचुएशन बढ़ जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा हाइब्रिड वैरायटी है। और एक गोल करके चिली है, और ये खाने में टेस्टी होते हैं, ज्यादा तीखा नहीं होते हैं, लेकिन ये भी लिपिड के लिए काम करते हैं। ज्यादा जो फैटी वाला लोग होते हैं, इनको देते हैं खाने के लिए, और ये लोग थोड़ा दुबलापन बन जाते हैं। तो इसी हिसाब से और मार्केट भी है। आसाम से रेड चिली का ड्राई पाउडर, रेड चिली का पिकल्स, रेड चिली का सॉस, ये सारा अभी इंडस्ट्री शुरू हो गया। और हॉर्टिकल्चर या दूसरा इंडस्ट्री भी बढ़ गया। तो इसके साथ जैसे आंवला बोल दिया आप लोग ने, आंवला के साथ भी चिली मिला करके, भूत जलकिया मिला करके पिकल बनाते हैं, जो खाने में भी टेस्टी है और ये भूख भी बढ़ा देते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रेशन भी बढ़ जाते हैं। और भूत जलकिया का रोल हार्मोन में भी है, इसे बोल करके जैसे औरत लोगों का इनफर्टिलिटी में मतलब जिन लोगों का इनफर्टिलिटी है, इन लोगों का नॉर्मल करने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने ट्रेडिशनली देखा है। हमारा जब बच्चा पैदा होते हैं, पर 5 डेज में हम लोग एक डे मनाते हैं, उसमें हम चिली पाउडर नमक के साथ
लोगों को खाने के लिए देते हैं। ये अरे ट्रेडिशन शायद इसलिए बनते हैं कि क्योंकि हाँ, खाने के लिए देते हैं ताकि शायद मेरा हिसाब से ये स्टिमुलेंट बन जाते हैं लोगों को के ऊपर, और जैसे इनफर्टिलिटी ना हो इसलिए भी औरत लोगों को देते हैं। ये सारा मेरा नॉलेज शेयर आप लोगों से किया है। धन्यवाद सर। Thank you. Thank you, Thank sir. you so much. Thank you so much. You added so many new things, especially you talked about the jalokia, especially which is much more used there in Guwahati. Of course, the छोटी वाली भी आपने छोटा मिर्च का बताया, और चटनी पुदीना के साथ में चिली का इस्तेमाल बताया। लगभग ऑल ओवर इंडिया, अपने देश की तो हम बात कर सकते हैं, वी आर ऑल यूजिंग इन द सेम मैनर। आपने एक चीज और बताई, जैसे कि ये चिली खा के जो आपने बताया कि ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल पर असर करके, ये आपने कहा प्रेजेंटेशन भी हुआ है, पेपर पब्लिश हुआ है। तो दो कॉन्सेप्ट आ गए। एक कॉन्सेप्ट यह है कि अभी पीछे हमारे सभी गेस्ट स्पीकर से बताया था, स्पेशली राव साहब ने भी, त्रिपाठी जी ने भी, और उसने सौम्या जी ने भी, कि इट इज यूजफुल इन द ओबेसिटी केसेस। तो उन्होंने ओबेसिटी मींस अपरेंटली लुक वाइज जो यूज पर्सन है उन पर चिली, रेड चिली का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ओबेसिटी कम होती है, या वेट गेन रुकता है और वेट लॉस शुरू हो सकता है। आपको दूसरे तरीके से बताया कि चूंकि ओबेसिटी में अगर हाइपरटेंशन है तो ये लिपिड प्रोफाइल पर वर्क करेगा। लिपिड अगर डाउन कंट्रोल में आ जाएगी तो हाइपरटेंशन पर ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा और वो अंडर कंट्रोल आने लगेगा। ये दो क्लिनिकल या थेरेपेटिकल यूज सामने आए कि चिली को यूज करके हम ओबेसिटी के लिए वर्क करेंगे, और जब हमारा हाइपरटेंशन कंट्रोल आ जाएगा, ऊपर से इसके एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो है ना, वो समझते हुए अगर कहीं पर भी नोट बने, जैसे कि हमारा फिर से वही पीसीओडी का केस आ गया, तो पीसीओडी केस में भी जो चिली और रेड चिली के यूज करने के मामले में इसको एसिड और पेप्सिस का जो रेशियो वो अगर डिस्टर्ब नहीं हो, इतना ख्याल रखते हुए इन्हें जेंटल एंड रीजनेबल डोज में इस्तेमाल किया जाए, तो शायद पीसीओडी जैसी चीजों के जो इन्फ्लेमेटरी फेजेस है उसमें भी ये डिके ला सकता है या उसको डिसॉल्व करने में सहायक हो सकता है। ओवरऑल डिस्कशन ये बात सामने आई। जी सर, इसीलिए शायद मैंने वही लगाने की कोशिश करी है कि इनफर्टिलिटी में कैसे काम करेगा। ऑन वन एंड इट्स स्टिमुलेंट यूज विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर रिलीजिंग द रिलेटेड हार्मोन्स, and at the same time its anti-inflammatory effect will affect the new growth of that PCOD cases. In that way, in both way, it will be helpful. Yes, but yes, it should be consumed in a very genuine and means justified, judicially justified quantity. Thank you so much. You did a lot good information. Of course, I am having Dr. Leena, and Dr. Leena Karekar, of course, being lady, a very important place, kitchen is always there to make more and more recipes tasty. She might be having some information to add on today's very important topic. So if Madam Leena Karekar is here, I am inviting her to please join and give some informations and experiences, whatever having with you, you please. And I again request Dr. C.P. Sharma sir, as he is comfortable, he may give a good information based on his experience. So Dr. Leena ji is here. Madam, are you hearing us? Would you like to? Yes, please. Yes, Thank yes, you. yes. Yes, thank you. So kind of. But today, today's topic is so nice, and you have given so much inputs. I don't have to add anything more now. You have got no personal experience. How much you are fond of chili? I'm very much fond of, because as a Maharashtrian, This we is are what the taking good this information is lasan with you. chutney is everyday in our meal. Lasan chutney, we are using it. And in Gujarat also, chilies, in every farsan they will eat chili. They are loving chili more in Gujarat. In Gujarat, they used to keep everything with added with sugar, even dal or any sabji. Yeah, dal, but with chili also, they have plain chili Chili along also. with it. Yes. Have you got any therapeutic use of chili in your experience? No, not that much. Okay. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you.
Dr. C.P. sir, I am waiting for your blessings. Sir, are you here? Have you gone for sleep? So in this way, I am just completing a first circle of our means dignitaries who are available here. I do hope that as Dr. B.M. Tripathi was the first guest speaker, he might have gone through listening all the rest of the speakers and the discussions also. He may be in position to add on something which might have left. Dr. Yes, I would like to call Dr. Nitin Urmaliaji as such, because he may very intelligently make a line for this excess use of chili as a dushi wish or whatever there. So, but it is useful in Am Pachan. So that dushi which is in a form of because of the arm might be meted out with the use of chili, but still there might be good information in his mind. So I am in a fix that to whom I call first. Dr. Tripathi, you please be ready after Dr. Urmaliaji. So Dr. Nitin Urmaliaji, please come with your points. Thank you. Thank you, sir, for giving me chance to Yes. just share my knowledge. It's in your front of platform. all. There is no question of chance. Please. यस यस सर. सो इसमें सर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बताया है, तो मेरे पास भी वही टॉपिक है, पर फिर भी मैं कुछ डिफरेंट एक चीज बताना चाहूंगा कि सर हमारे विश्व के चिकित्सा उपक्रम 24 होते हैं. तो 24 उपक्रम में मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषणाग्नि, परिषेका, अवगा, रक्तमोक्षण, वमन, विरेकोप, धनानी, उपदा, उपना, वमन, अंजन, औषध, प्रथमन, नश्य, लेह, औषध, प्रश्मनानी. तो यहाँ पर मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न ये क्रम से चलते हैं. सांप ने काटा है और सांप को बहुत प्रधान विष पहले माना जाता था, तो उसके प्रधान विष में सबसे पहले मंत्र चिकित्सा करते थे. उस समय मंत्र चिकित्सा का बहुत वैल्यू थे. आज तो बहुत रेयर हो गया है, बहुत कम लोग करते हैं और अवेलेबल नहीं होते हैं हर जगह, तो थोड़ा सा मंत्र चिकित्सा थोड़ा कम हो गई है. तो मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न ये करते करते यहाँ तक हालत हो जाती थी जब पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता था, तो उसके लिए एक विशिष्ट वो था संज्ञा स्थापन. तो संज्ञा स्थापन करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रधमन किया जाता था. तो प्रधमन में नाक में ब्लैक पेपर का यूज बहुत ज्यादा होता था. शुंठी और ब्लैक पेपर के चूर्ण को नाक में ब्लो, चूर्ण रूप में ब्लो कर दिया जाता था. जैसे ही फूंक मार के नाक में पहुंचा दिया जाता. तो इसके क्या होते हैं, ब्रेन में रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं ये चिली के. तो ब्रेन में रिसेप्टर्स ज्यादा होने की वजह से एकदम से अलर्ट आता है. ब्रेन को अलर्ट आने की वजह से बहुत ज्यादा खांसी आती है और पेशेंट हो सकता है जागृत अवस्था में आ जाता है. तो कई बार ये फॉर्मूला बहुत चलता था पहले. अब आज की डेट में तो बहुत सारी मॉडर्न साइंस है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और बहुत सारे मेडिकेशंस भी है जो कि ला सकते हैं. और बाकी डिफिब्रिलेशन तो है ही, उसके द्वारा भी आजकल जगाया जाता है. सीपीयू भी कराया जाता है और डिफिब्रिलेशन. तो सीपीयू डिफिब्रिलेशन के अलावा भी एक कर सकते थे हैं अभी भी, जो कि पहले एंशिएंट टाइम पे होता था. तो इसका बहुत अच्छा रोल है संज्ञा स्थापन में, जो कि चतुर्विंशति, चरक ने चतुर्विंशति उपक्रम बताए हैं, उसके अंतर्गत एक समाहित है संज्ञा स्थापन. तो इसमें चिली का बहुत ज्यादा रोल होता था. और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो चिली की बहुत सारी बातें पता चलती हैं. ये पुर्तगालियों के द्वारा बताया गया है. हालांकि बहुत सारी चीज डिस्कस हो चुकी है, मैं स्किप करूंगा बहुत सारा. और इसके इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे जब कोई भी हो, और ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर्स और कार्डियक डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी, इन सब में चिली का बहुत अच्छा रोल है. और हमारे यहाँ इसको चिली नाम ही पड़ा है इसका, क्योंकि ब्लैक पेपर इसका अर्थ होता है, चिली का अर्थ. और चिली से जो भी बनते हैं जो भी सामान आयोडेस्पी, वो चिलीज कहलाते हैं, चिलीज. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, CHILI, CHILLI, तो ऐसा चिलीज हम कहते हैं. तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इसका आयुर्वेद के अगत तंत्र में एज ए संज्ञा स्थापन के रूप में बहुत बड़ा रोल है, जो कि पहले दिया जाता था. पहले संसाधन कम थे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस था. तो एज ए मेडिसिनल यूज इसका होता था. तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. थैंक यू डॉक्टर नितिन उमाली जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई. बढ़िया, आपने कैसे देखे, ये होती है होशियारी कि मुद्दा कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, हम अपने विषय विशेषज्ञ होने के नाते उस एंगल से देख सकते हैं कि हम प्रधमन नष्ट के रूप में
जब हम इसका शुंठी के साथ में चिली पाउडर डालते थे तो जी, जाके जी। ब्रेन रिसेप्टर से वर्क हो जाएगा और स्टिमुलेशन मिलके इसमें संज्ञा स्थापना हो सकती है, माने आदमी जागृत हो सकता है या कुछ हरकत पा बिल्कुल। सकता है। लेकिन यहाँ जब आप शुंठी की जगह ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं, आज के दिन हम रेड चिली का बना रहे हैं, क्या कभी रेड चिली के पाउडर का या कोई बीज का कभी इस्तेमाल किया गया है इसमें? ऐसा कोई विधान है? हेलो, डॉक्टर शीतल शर्मा जी के माइक से कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, इसको बंद थोड़ा म्यूट करना होगा। हेलो, हाँ नितिन जी करिए, आप करिए, आप थोड़ा इनका यस बंद हो गया, आप करिए शुरू करिए। नेटवर्क आराम अपने आप चला गया था जी। अच्छा तो सर हम आज की डेट में जो अवेलेबल है उसका हम प्रतिनिधि द्रव्य मान लेंगे कि रेड चिली है। अच्छा, चिली जनरली घर में मिलती है। नहीं, तो रेड हम चिली उसकी का जगह विधान, रेड चिली का विधान शास्त्र में है या नहीं, मैं ये पूछा। 24 आपने जो क्रम बताए हैं, स्पेशली सर्पदंश चिकित्सा के मैनेजमेंट में, तो उसमें आपने जो व्यवस्था बताई कि उससे नस जाएगा तो खांसी आएगी, स्टिमुलेशन जाएगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन उसमें रेड चिली के पाउडर या बीज का कहीं इस्तेमाल है या ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया गया? एक्चुअली ब्लैक पेपर का है, ब्लैक पेपर में हम बोलेंगे। हाँ, और रेड चिली का हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। एक काम तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी म्यूकस लाइनिंग ही बहुत ही, वो तो एक काउंटर इरिटेंट है, देसी घी में मिला के एक बार लगा सकते हैं। मैं जब बच्चे उसको बिल्कुल सही बोला सर आपने। थोड़ा सा मेरा बिल्कुल दिमाग सर, गया कि इसको हम पेधवन के ना बजाय लगा के इसको हम है ना हम मर्श नस के तौर पर लगाएं, और हाँ, तो वो थोड़ा सा म्यूकस लाइनिंग को भी अगर काउंटर इरिटेशन लगा तो भी वो इसके मैसेज नासिका या शीर्षोद्वारम के क्रम में उसमें जाकर स्टिमुलेशन मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली सर त्रिकटु का मेंशन है, शुंठी मरीच पिपली, इसको ब्लो करना है हमें। लेकिन उसमें हम अगर घर में अवेलेबल है जो आपने बताया फॉर्मूला, हम ये भी कर सकते हैं। और बच्चों का देखकर, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे में हमें कम से कम घी लगाना चाहिए। एकदम से हम उसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जो युवा अवस्था में है तो उसको हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हैं। मैंने तो ये बात इसलिए कही कि जब कभी दाल आल में सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए तो 1-1.5 चम्मच भी घी मिला लेते हैं, तो उसमें एक वो आवरण हो जाता है, जाएगा तो दाल संग में पेट में जाएगी, लेकिन वो आवरण होकर निगलने में कम से कम जीभ पर उतना इरिटेशन नहीं देगी। बिल्कुल काउंटर इरिटेशन के लिए आपने इनकैप्सुलेशन कर ही दिया देसी घी का। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपके द्वारा इस तरीके से बहुत सी अनबुझी पहेलियां खुलती रहती हैं, सुलझती रहती हैं, और हम लोगों के प्लेटफॉर्म को आनंद मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, डॉक्टर बीएम त्रिपाठी जी, हम आपको एक बार फिर से चाहेंगे कि आप कुछ एड ऑन करके यस आप देंगे तो मैं अच्छा काफी जद्दोजहद के बाद ये बात हो रही है कि क्या हम काली मिर्च की जगह पर लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर शास्त्र में हर चीज वर्णित है। चक्रपाणी लिखते हैं कि रस प्रधानम आहार द्रव्यम और वीर प्रधानम औषध द्रव्यम। आचार्य चक्रपाणी जी, तो जो पोटेंसी की बात आती है सर, वीर्य मतलब उष्ण और शीत नहीं, जो पोटेंसी की बात है वो औषध द्रव्य में आती है, जो रस की बात है वो आहार द्रव्य में आती है। लाल मिर्च का जो वर्णन आया, मतलब जो यहाँ पर काली मिर्च का वर्णन आता है सर, आचार्य सारंगधर ने विदाही द्रव्यों को एग्जाम्पल में रखा है, प्रमाथी द्रव्यों को एग्जाम्पल में रखा है। और जो लाल मिर्च की हम लोग बात कर रहे हैं सर, आज कटु रस है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, वो ठीक है। आहार द्रव्य में भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बट सर जब त्रिकटु की बात आएगी या जब सीतोपलादि चूर्ण की बात आएगी, तालिसादि चूर्ण की बात आएगी, तो वहां मरीच मतलब मरीच ही है, काली मिर्च से ही है, वहां लाल मिर्च नहीं मिलाई जा सकती। जी जी, वही तो पॉइंट क्लियर होना है। सिर्फ कटुरस हो जाने से वो उसकी औषधि द्रव्य में प्रधानता नहीं हो जाएगी सर, क्योंकि कटुरस का भी लेवल अलग अलग। नहीं, यहाँ पर लोकल की बात चल रही है। लोकल हाँ, क्या है? लोकल एप्लीकेशन तो ऑलरेडी है सर इसका। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि एक फार्मा कंपनी, आपने शायद बाद में नाम भी लिया था उसमें, तो लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं सर। लेकिन नस्य के लिए कि ये हाइपोथेटिकल बात है, कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं होता कि लाल मिर्ची का प्रयोग हम लोग नस्य में कर पाए।
वो हो सकता along है with कि along with some other ingredient like शुंठी to make it more encounter, कहीं पर नहीं, स्पेशली सर्पदंश वगैरह के ऐसे केस में जहाँ पर कि जीवन मृत्यु का सवाल है, बच गया तो करना सार्थक हो गया। और अगर जैसे कि आप जब आप सीपीयू कराते हैं, देते हैं, चाहे एक दो रिब्स टूट भी जाए, इसकी चिंता नहीं होती है, बस ये होती है कि सर्वाइव कर जाए। सर संन्यास की चिकित्सा में सबसे ज्यादा जो प्रधवन वाली बातें आई हैं, वहां संन्यास की चिकित्सा में तो यहाँ तक कहा कि वाघभट्ट ने कहा कि बिच्छू से भी कटवा सकते हैं या बिल्कुल, नाखून बिल्कुल, के सुई चुभो सकते हैं, क्योंकि जो अंगुइस सब अंगुइस का लेवल है वहां पर बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल वो रहता है, तो वो मिलता है। लेकिन सर वहां भी लाल मिर्च का वर्णन नहीं है, क्योंकि बृहत्तरई में तो है ही नहीं कहीं पर ऐसा यूज करने को। और दूसरी चलिए चीज ये है सर कि एक बात आई निष्ठेश्वर सर की, तो सर से मैं मिला हूँ और सीएमई में सर लेक्चर लेने आते हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जामनगर में रहे काफी समय, अब रिटायर हो हाँ, गए हैं। उनको सब वहीं से बुलाए थे भाई, 80s की और बात है, 82 की, हाँ, 81 की। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं मेरे और ख्याल हमारी से बात भी होती है कभी कभी। बीएचयू की पीजी है शायद। हाँ, लेकिन जामनगर में काम किया हुआ है सर। हाँ, क्योंकि हम एज ए एलुमनाई मीट भी था उस साल, और हमारी ये जी। कॉन्फ्रेंस भी थी, तो हमें अच्छे से याद है। हम प्रोफेसर आर सिंह के साथ में, और हम चंद्रकांत गटियार जी उनके एसोसिएट से काम कर रहे थे, तो मुझे अपने छात्र जीवन की याद आ गई। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस दृष्टिकोण से कि आपकी जो न केवल प्रत्युत्पन्न मति, बल्कि जो उपस्थित ग्रंथ हैं, आचार्य चक्रपाणी जी का उल्लेख हो जाए या कश्यप जी का हो जाए या चरक संहिताएं, तो आपकी यही हैं, हमें बड़ा बल मिलता है। हमारी प्लेटफॉर्म और मजबूत होती है ज्ञान के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से, और नॉलेज की सार्थकता और प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से। तो आप जुड़ा करिए, आपका स्वागत है, और आपका कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है, हमें इस बात की दिन प्रतिदिन खुशी होती है। डॉक्टर किशोर चंद्र जी, एक बात बोलो सर, हजारिका से एक बात बोलो सर। बोलिए 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 regarding your black chili powder, red chili powder, सर एक बात जी बताइए। हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनली जो इन लोगों ने ये चिली पाउडर को नाक में डालते हैं, जब ज्यादा ये हॉरर टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होते हैं, इन लोगों को ये रेड चिली पाउडर नाक में नशा के रूप में डालते हैं, और ऊपर से ठंडा पानी डाल करके इनको स्नीजिंग कराते हैं, और ये सिजोफ्रेनिया थोड़ा कम हो जाते हैं। रेड चिली का पाउडर, रेड चिली पाउडर, जी जी, रेड चिली, जैसे रिगार्डिंग मॉडी, जी सर, रेड चिली, जैसे हम लोग जो सर एक बात सुनिए सर, त्रिपाठी जी, आप हजारिका जी से रेफरेंस लीजिए, का बात होते हैं, स्थानीय व्यवस्था है या शास्त्रोक्त है, और इस पर कुछ अपना प्रत्युत्तर की तैयारी करिए। और एक बात है सर, जो ब्लैक चिली होते हैं, इसका कोटू विपाक है, लेकिन विपाक मधुर होते हैं, इसीलिए हम लोग ट्रिकोटू में डाल सकते हैं। लेकिन रेड चिली हम ट्रिकोटू में इसलिए नहीं डालते हैं, वो विपाक उष्ण होते हैं, सो इसीलिए शायद नहीं डाला हुआ था रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन जहाँ नस्यों का बात बोला है, यहाँ पे हमने देखा ढेर सारे नस्यों में डालते हैं। जी सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ उर्माली जी, नितिन जी और नवा जी सब का व्यू पॉइंट एक मत हो रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप कुछ प्रत्युत्तर करेंगे इन पर? सर, जो भाव प्रकाश में गुण लिखा हुआ है मरीच का, उसमें आप हजारिका जी से पहले जो वो कह रहे हैं, वो स्थानीय व्यवस्था है या कोई संदर्भ है, उसके बारे में हम नहीं सर, शास्त्रोक्त रेफरेंस ऐसा नहीं है सर। सिजोफ्रेनिया तो व्याधि ही आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, उसकी जगह पे हम हाँ, लेकिन सर ये शास्त्रोक्त रेफरेंस बृहत्त्रयी और चिकित्सा ग्रंथों में मेरे ख्याल से नहीं है, जितना मैंने सर्च किया है। दूसरा सर ने एक बात कही कि मरीच का मधुर विपाक होता है, इसलिए त्रिकटु या उसमें मिलाते हैं। तो सर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आर्द्र मरीच का नहीं, अरे रेड चिली का उष्ण होता है, और ब्लैक पेपर का जो है वो कटु में रहता है, इसलिए रस के हिसाब से इसलिए यूज करते हैं। नहीं सर, जो आर्द्र मरीच होता है, भाव प्रकाश में गुणधर्म लिखा है, यानी जो कच्चा रहता है सर, ये कहें मैच्योर नहीं रहता है, सूखा हुआ नहीं रहता है, उसके लिए पिपली और उसके लिए दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि ये आर्द्र जो होती है कफवर्धक होती है, मधुर रस प्रधान होती है।
लेकिन जब विपाक की बात आएगी सर, तो सिर्फ शुंठी और पिप्पली का विपाक मधुर होता है त्रिकटु में, मरीच का विपाक कटु ही होता है। ये बात शास्त्र में कही। हमने तो मोटा मोटा पढ़ा था, कटुयुक्त कषायनम विपाका प्रायश्य कटु। हाँ बिल्कुल सर, सही है। हमें तो इतना ही याद है, जो याद है पक्का याद है जी। कटुयुक्त लेकिन कषायनम विपाका प्रायश्य कटु। सर उन्होंने वही लिखा आगे कि जो कटु रस वाले, कटु विपाक वाले, कटु रस वाले द्रव्य होते हैं अवृश्य होते हैं, लेकिन शुंठी और पिप्पली इसमें जो है वो अपवाद है, इनका विपाक मधुर होता है, इसलिए हम इनको वृक्ष द्रव्यों की तरह यूज करते हैं। सॉरी, आप तीनों लोगों के विचार में हम ये मान लेते हैं कि हमें नस्य के तौर पर रेड चिली का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी स्किन पर काउंटर इरिटेंट के तौर पर यहीं पर हमें इन्फ्लेमेशन कम करना है या संवेदनशीलता लानी है किसी माने नमनेस के पार्ट पे या कुछ पर, तो शायद कर सके। जी। और सर जो पीपर का यूज करते हैं, काली मिर्च का नस्य में या घृय योग बताए हैं, प्रधवन नस्य बताए हैं, उसमें इसलिए सर कि उसमें प्रमाथी गुण होता है, और प्रमाथी गुण की डिफिनेशन जो आचार्य सारंगधर ने बताई सर, उन्होंने लिखा निज वीर्येण यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथी स्यात् तद्यथा मरीचम वचा। तो वहां पर भी प्रमाथी गुण होने के कारण उसको मिला है। दूसरा सर जो इसका प्रयोग है त्रिकटु के रूप में या जो भी योग मिश्रक गण में जहां भी इसका वर्णन आया है, जिन भी योगों में, वो इंटरनल यूज के लिए जितना भी आया है डिटेल, वो सब काली मिर्च के लिए आया है। और जहां भी रिसर्च के बाद या ऐसे प्रयोग कर रहे हैं आधुनिक अनुसंधान, चिली का ज्यादा हो। चलिए त्रिपाठी जी, आपका भी धन्यवाद। मैंने विचार को मिला आगे। डॉक्टर किशोर चंद्र जी, हम समझते हैं हमारे पास आज अभी उनके विचार नहीं कुछ आए हैं, अगर उनका कुछ सबमिट करने का मन है तो उनका स्वागत है। डॉक्टर किशोर चंद्र जी, आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? आप थोड़ा परिचय बता के थोड़ा बताइए अगर आपको, कि मिर्च तो बहुत छोटा सा ही, काली मिर्च तो बहुत ही छोटी, हरी मिर्च थोड़ी उससे बड़ी साइज में होती है। 10 बजने जा रहे हैं, हम चाहते हैं मिर्च की चर्चा आज समाप्त करें, जिससे कि ज्यादा लंबा खींचने पर मिर्च के उसके अंतर्गत रहने वाले गुण दोष से हम लोग जो है अपने समय बाधित न होने पाए। तो अगर डॉक्टर किशोर चंद्र जी आप कुछ बोले जाएंगे। और मैं सोचता हूँ शायद सीपी शर्मा जी तो आज कुछ डिस्टर्बेंस में हमें उनके वचन नहीं मिल पा रहे हैं। और नवरात्रि के अंत में उस देवी माँ की कृपा कटाक्ष द्वारा आप कुछ कह रहे हैं वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैंने एक रेफरेंस पोस्ट किया हाँ है देखा चैट में। उसमें हेल्थ कनाडा की वेबसाइट पे ये रेफरेंस है कि रेड पेपर जो है ये स्किन के ऊपर, स्किन की जो पर्टिकुलरली लोकल कंडीशन जैसे पोस्ट हर्पेटिक नेरेजिया या डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, वहाँ इसका इस्तेमाल उन्होंने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हमारे डिंडीज में किसी के यहाँ टेलीविजन बज रहा है? नहीं, हम आवाज नहीं सुन पा रहे, हमारी बाधा आ रही है। नागलोक से आई नाग कन्या हो तुम इस गोलोक में सुहागी कैसे बन सकती हो? शर्मा सर जी सर, आपका आवाज माइक ऑन है, आपके विचार हमें चाहिए, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। वो आपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दिया, आप बताइए, आपका स्वागत है। आज की चर्चा कैसी रही है और आपने अपने आशीर्वचन देने हैं, उसके साथ ही हम फिर आज की समाप्ति के लिए वर्मा सर प्रोफेसर पवन शर्मा जी को वापस करेंगे। यस सर, कुछ डिस्टर्बेंस है आपकी साइड में? जी जी, प्रणाम सर, नमस्कार। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज। पवन जी नमस्कार। हाँ सर, अग्निहोत्री जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कुछ अब कुछ आ रहा है डिस्टर्बेंस? नहीं, आवाज बिल्कुल साफ आवाज आ रही, प्लीज कंटिन्यू। मैं तो केवल दो ही बात कहूंगा सर। जी जी, कि जहाँ आयुर्वेद ने, पहले सभी को नमस्कार करता हूँ, और नमस्कार के बाद केवल एक बात कहूंगा, आहार द्रव्य को आहार द्रव्य रहने दें, औषधि द्रव्य को औषधि द्रव्य रहने। जहां हमारे आचार्यों ने लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, श्वेत मिर्ची और कृष्ण मिर्च, ये 3-4 नाम मिलते हैं पूरे टेक्स्ट में, यदि अपन देखें। एक श्वेत मिर्च भी मिलती है सर, दक्षिण मिर्ची।
कृष्ण मरीच का जिसे अपन प्रायः हमारे औषधीय द्रव्यों में जिसका प्रयोग किया जाता है, चाहे त्रिकटु में हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, उसका काली मिर्च जिसे कहते हैं, वो औषधीय प्रयोग उसके ढेरों, और लाल फ्रिक्शनल प्रयोग आपका कुत्ते ने है तो लाल आपका आ नहीं पा रहा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है सर। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। आपने एक बड़ी बात बताई कि हम आहार द्रव्य को आहार द्रव्य में रखें और औषध द्रव्यों को औषध द्रव्य में रखें, ये आपका मंतव्य है। तो जो सब लोग जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। मैंने आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, आपका विचार आ गया है। आपने ये रखा है कि हम इस वितंडावाद में न पड़े या इसमें इस शंका में न पड़े, आहार द्रव्य को आहार द्रव्य में रखें और औषध द्रव्यों को औषध द्रव्य में रखें। ये आपका मत है, लेकिन हमारी समस्या दूसरी है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ना, हम आहार द्रव्य को औषध द्रव्य में रखें और न रखें और औषधि को आहार द्रव्य न रखें तो हमारा एक पल नहीं चलेगा। हमारे रसोई में हल्दी है, हमारे रसोई में जीरा है, हमारी रसोई में काली मिर्च है, अजवाइन है, मेथी है, और हमारी रसोई में दूध है। हम गंधक तक शोधन करते हैं, हम औषधियों शोधन करते हैं, हम वहां दूध ले जाते हैं। हमारी आहार की औषधि, जितनी औषधियां हमारी औषधि प्रयोग में होती हैं, उनको हम अपने आहार द्रव्य में भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो आहार द्रव्य में प्रयोग करते संस्कार हैं। संस्कार प्रदान है सर, संस्कार प्रदान। नहीं, जब अपन आहार नहीं, वो ये मतलब ये तो एक मत भिन्नता वाली बात हुई, लेकिन इनको हम नहीं हटा। पंच लवण हम औषधि निर्माण में भी उपयोग करते हैं, सेंधा नमक और हम सामान्य नमक हम अपने रसोई में रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो शायद मुश्किल होगा, इसीलिए चिली का थेरापेटिक स्पेशल आज हम लोग के मुद्दे से भटक ना जाए। आज की टॉपिक का महत्ता यही थी कि हम फरवरी महीने के चौथे बृहस्पतिवार को ये जो है मेक्सिको में चिली का बर्थडे मनाते हैं, रेड चिली का। तो उस रेड चिली के क्रम में हम लोग आए, तो हमारा विषयांतर या भटक न जाए। हम अगर काली मिर्च और सफेद मिर्ची चलेंगे तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। हमारा तो सिर्फ स्थानीय प्रयोग या अभ्यंतर प्रयोग अथवा रेसिपी में थेरापेटिक यूज या रेसिपी में हम कैसे उपयोग करें और कितना चले आ रहे हैं, कितना। ये बातें तो अच्छी लगी कि वो श्रीलंका से आई, डोमा साहब ने बताया, या ब्राजील से आई या मेक्सिको से आई, वो तो अलग चीजें हो गई। लेकिन आज भारत में हम इसको, हम आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म पर इसका जो इस्तेमाल ले रहे हैं, वो भावना यही है कि हम इसको, जैसे ओबेसिटी बात आ गई, लिपिड प्रोफाइल बात आ गई, हाइपरटेंशन बात आ गई, तो वो सब चीजें उस गुणक्रम से अच्छी लगी। खैर चलिए, आपका बहुत बहुत विचारों स्वागत है। कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में सर गुंटूर की लाल मिर्च सबसे प्रसिद्ध है। हाँ, गुंटूर आंध्र प्रदेश की। जी बिल्कुल, इसीलिए वहां के और लोग गुंटूर का घी उसका इलाज भी है सर। गुंटूर का घी भी है, गाय का घी भी गुंटूर में अच्छा मिलता है। अरे वाह, हाँ तो डोट एंटीडोट है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सारे आज मेहमानों का, हमारे अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद उनके इतनी इंटेलिजेंट और नॉलेजफुल कंट्रीब्यूशन के लिए। सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और आज की इस कार्रवाई को हम आगे पूर्ण की तरफ ले जाने के लिए प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को अगले के संप्रेषण के लिए वापस करते हैं। सभी का धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम परसों में एक नया विषय लेके आ रहे हैं, संप्राप्ति विघटन, वात व्याधि और उसकी संप्राप्ति विघटन। इस विषय पे परसों चर्चा होगी, कृपया जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार जी, थैंक यू। टाइम वही 8 बजे का। हाँ ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर।